All right, hey everybody. I'm hoping that you're all ready for the very important session. This is one session which is going to be important for everyone, and I'm hoping that all the people who would not be attending the session will also be revising this, primarily because this session is going to be a major topic for discussion in most of the interviews that you are going to face. Almost more than 90% probability that it is going to be in your discussion in this month for sure. So फरवरी में जो भी इंटरव्यूज हैं उसके लिए एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, that is going to be the budget. And for that we have Ayush sir, who would be helping us out in terms of understanding and breaking down. Okay, for us, Ayush sir is the Nirmala Tai. So over to Ayush sir. Very good evening, boys and girls. Hope you guys are doing well. So, I think we have good 100 participants. So, we can now start the discussion. So, given that we are discussing this at 11 p.m., I guess all of you must have gone through at least the minutes of the discussion that happened during the parliament. Any feedback, any thoughts, initial thoughts regarding the budget, if you guys have followed it at all? Maybe you can just raise a hand, unmute, and speak. Yep. Yep. Any more responses, right, guys? कुछ data, कुछ figure, investments. Yeah, tax slab is one of the most burning topics, and we, as mentors, are also internally discussing ourselves. The right. Okay. Uh, just uh, right. Hemant, would you want to unmute and speak? Hello, I'm audible. Yeah. Hi. Good evening. Yeah, I just think nothing much in terms of that FIIs are going to see India as a lucrative market to invest in. I think nothing of that sort has happened. I think they are still going to go out. Am I right Hmm. in terms of thinking that? Guy, basically, अभी जनरलाइज करना तो बहुत गलत बात हो जाएगी. There are certain sectors in which India is really lucrative as a prospect, given that we are a young nation, and probably this is the time in the next 20, 30 years we are going to reap the demographic dividend. I hope you know what is demographic dividend, right? So Yes. in India being a young nation, there is still a lot of scope, especially in the MSME sector, and there is a lot of things that has happened. And today in the morning, when Nirmala Ji was discussing about the budget, there were few measures that was taken for the MSME sector, and India, this sector has really made India proud in some of the following aspects. And there has been some changes in the definition of MSMEs that we are going to explore during this discussion. Given तुम्हारे question का answer, whether FIIs would be interested or not, again, like Sudhanshu says, it depends. Okay. कोई concrete इसमें आंसर हम लोग नहीं दे सकते, but again there are certain sectors which are very lucrative, and there are certain sectors which we believe can be a burning point or maybe the pain point for us in the coming financial year. Hi Twinkle, please, you can unmute and speak. Yes, sir. So there is a news related to gig economy. Government is Yeah. trying to make it formal by Yeah. giving them health benefits, and Mhm. also there has been news regarding the uh, ease of doing business. Government is Hmm. trying to make it more easier to register and uh, taking license. Yeah. So basically what is happening right now, uh, because we know that India is a growing sector in terms of there are a lot of small businesses which has come up in the recent past, especially in the last 5, 6 years. We have seen that small businesses are making big impact. However, there is a lot of paperwork, red tapeism which has happened, which acts as a deterrent for smooth incorporation of any kind of business. So the goal is to minimize the process, make it more smoother, streamlined करने का, so that smaller businesses जिनका turnover less than 5 CR होगा, 2 CR होगा, they will find it easier. क्योंकि क्या होता है कि
बिजनेसेस को रजिस्टर करने में अभी इतना टाइम लगता है कि उसको फाइनली इनकॉर्पोरेट होते होते देयर कुड बी अ टाइम की 1 साल लग गए, राइट? एंड अगेन एवरीथिंग इज ड्रिवन थ्रू सम हायरार्की, सम प्रोसेसेस। तो उसको जितना मिनिमाइज कर पाएंगे, पेपर वर्क जितना मिनिमाइज कर पाएंगे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज अगेन अ बिग इशू फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगेन दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, आईटीआर, तुम्हारा बिजनेस प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट, बिजनेस मॉडल, हर चीज दिखाना पड़ता है थ्रू। और जबकि बैंक्स से लोन लेना शुड बी इजी और एज कम्पेयर टू टेकिंग मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर थोड़ा एक ब्रॉड टर्म हो जाता है एक छोटे छोटे स्केल के बिजनेस के लिए। हाउएवर यहाँ देखा जाता है इंडिया में कि पीपल टेंड टू बोरो इट फ्रॉम देयर सम नोन रिच एचएनआई से, जो कि उनसे बहुत ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। तो उनका वो जो एक्सपेंडिचर है बढ़ जाता है पीएनएल का, वो इंटरेस्ट में काफी बढ़ जाता है। 2%, 3%, 4% वो पर मंथ लेते हैं। ठीक है। And good point about the gig economy. We'll discuss gig economy, online workers in detail in the coming discussion. Okay, Jap, Japin Singh. I'm sorry if I pronounce it wrong, but you can please unmute if you want to speak. Japneet. You're not audible. I'm audible now? Very feeble, but yeah, we can manage. Still not audible. Uh, okay, Jamrit, you can type your answer in the chat. Maybe once your connection is restored, we'll have a discussion with you. Dhananjay Bharadwaj, would you want to speak something about the budget? Yes, sir. Thank you for allowing me to speak. I think in the starting of the discussion, they said that a lot of upskilling will be provided to agricultural laborers and production will be boosted, specifically of pulses and edible oils. Right. And there was a statement which they made that most of them will not have to actually shift to the urban cities because of Hmm. compulsion. They can Hmm. actually live in the rural areas only in order to make more Hmm. money, because usually people shift to the urban cities from the rural areas to find more opportunities. So Hmm. they will be trying to develop rural areas more. Second thing Hmm. which they said, which was quite interesting for me, was that MSMEs will be provided with opportunities to, specifically MSMEs focused towards green energy will be given a lot of support by the government in terms of loan and in terms of upskilling as well. Hmm. Right. AV productions and specifically, solar panel production, all of these Hmm. small enterprises which are involved in these businesses will be given opportunities by the government, will be given upscaling by the government as well, and huge loans as well. Yep. So specifically, if I think this budget's focus towards the MSMEs and towards the agriculture sector is, Right. because they are the underdogs in our economy, has been giving, them an opportunity to develop furthermore, which is going to Right. obviously help our Right. Right. country holistically. Correct. Thank So basically, just to shorten your point, sustainability has always been the priority point for the government since the past 5, 10 years. That's why we see a lot of discussions happening around EVs, solar energy, wind energy, so on and so forth. This has always been a topic of discussion. From the interview standpoint, even I remember when I gave my, extempore for IIM Indore or Kozhikode, दोनों में से किसी एक में एक्सटेम्पर होता है, तो मेरा ये टॉपिक भी था, द फ्यूचर ऑफ ईवी इन इन इंडिया। मेरा इंटरव्यू था 2020 में। ठीक है। सो अगेन सस्टेनेबिलिटी हैज ऑलवेज बीन अ की प्रायोरिटी, और अभी के 10 साल में दिस इज द न्यू थिंग, राइट? Yes, sir. Another हम्म। point which I had was that this is because specifically in our country only we need to transition faster towards the EV, electric vehicles, specifically because since we have so much high pollution levels, and and also because हाँ। of the reason that we import most of the crude oil and it's quite expensive for us. So हम्म। transitioning towards green energy will provide industries opportunity to expand, and it will also solve the problem, the pollution problem. So it will be like killing two birds with one stone. See, So like having this kind of a goal is very good. However, if we talk about the infrastructure of EV, we are still lagging behind. yeah, And we are lying behind with a huge margin. मतलब कि you can still imagine EVs being run in the urban cities, but the moment you have to move out
Yes, because take they're a quite highway. expensive. मतलब you Yeah. cannot think of 100 Hmm. kilometer bhi, I don't think you will be able to drive. Mm-hmm. So The again, technological development is lacking for sure. right. The intent is there from the OMCs. Hmm. Basically, the oil marketing companies, they do want to set up EV charging stations. अभी तो fast charging का भी concept आ गया है. So basically तुम्हारा जो कार का बैटरी है वो 45 minutes में चार्ज हो जाएगा. Hmm. And उसके पीछे भी what else they are doing कि 45 minutes जब तुम्हारा हाईवे में कार की बैटरी चार्ज हो रही है तो उसके लिए भी the OMCs are working, and I have personally done one project with two OMCs, so we'll also talk about my experience about that. ठीक है. Hmm. Good point. ठीक है. सौम्य ज्योति आप बताओ प्लीज. हेमंत अगर हो गया Yes. तो you can lower your hand. Hello. Yeah, sorry. Hi. Yeah, so there is a major focus on the nuclear energy part also. Hmm. The government is also focusing on like improving self-sufficiency in the nuclear energy production. Also, there is one more point like a centralized KYC for the every people Good point. in India. Yeah. And one more thing, the reduction in basic customs duty in most of the products, like the medical goods and all, are much more cheaper right now. वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए किया Yes, yes. है. थैंक यू. गुड पॉइंट. Nupur. Am I audible? Yeah, audible. Hi, good evening. Thank you. Actually, not just in focus of today's budget, but I even like read a bit a short survey on PIB of yesterday's economic survey. Now, Hmm. linking both together, I can see that most importance or most emphasis is given to the manufacturing sector, as we Right. see. Right. Specifically, like today we hear about the EV or whatever, like the exempted capital goods are like they are included in the exempted goods list, some of the Hmm. EV capital goods. Now, Hmm. and yesterday I read a related point that we are exporting nearly 75% EV products from China, Right. and our dependence on China is continuously increasing like anything. Hmm. So yeah, in that sense, I think that there is this move towards boosting manufacturing overall in India. But then, as yesterday's economic survey mentioned, that there is a very much long way to go for India, because our growth is also has slowed down in this year as compared to the previous year. True. So, talking about import dependency of China, it has always been there. I think since the time I have gained consciousness. You talked about the raw materials for the EV infrastructure, right? Even this year's budget talked a lot about toys manufacturing industries. You know that the majority of the toys that we as students, kids have played with, all were made in China. Right. So Yeah, true. import dependency has always been a pain point for Indian economy, sadly. However, where we could not compete with China was, first of all, the cost, and secondly, the quality what they gave and what we had. But again, let's good point that you were able to draw parallels with the economic survey and the budget. I really appreciate that. Good job. Dhruv, please unmute yourself. Yes, thanks for the opportunity. And Um, I think this budget talked more about investing in people as well, and hmm, not just manufacturing sector and right. reducing the trade deficit. With the PM Research Fellowship program that was introduced, um, Hmm, to provide thousands of fellowships in technological institutes correct. like IITs and IIScs. Yeah. That is something that us who are looking forward for a postgrad could look up Hmm, to. hmm, Other than that, there was another scheme for Gyan Bharatam mission. you're right. So it's Uh, the पिछले साल भी ज्ञान से ही yeah, मतलब it is an extension of last year's yes, policy मतलब ideology only basically. yeah, to preserve India's heritage and manuscripts. So Right. Good point. Good point. yeah, those were the 2 points. Yeah, right. Manav. Yes, so I think that the major focus of the budget was to increase consumer spending. Hmm. The government is very ambitious for the Viksit Bharat program, and I see a lot of parallels. After the Second World War, US also started to focus on the middle class.
after, in 2000s, China also started to focus on middle class. China globalized the economy in 1970, and then from 2000s they started to focus on the middle class, and here they are. So I see this budget was a starting point Hmm. from moving towards the Garib and talking about the people who are below poverty line to an era focusing on the middle class. Nice, good, good, good. I think That China liberalized in 1978, if I'm not wrong. But again, like, मेरे को याद थोड़ा vaguely है. But again, honestly, इंडिया एंड चाइना दोनों साथ में ही लिबरलाइज होना शुरू कर दिया था. इंडिया ने फॉर्मली लिबरलाइज किया था 1991 में, बट अर्ली 1980s ऑनवर्ड्स ही इंडिया का लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था. और चाइना भी जब लिबरलाइज हुआ था 1975 के बाद ही हुआ था. So both yeah, the economies started liberalization at the same time with having similar population set. ठीक है, but again China, I mean, बहुत आगे निकल गया in terms of skill, manpower, workforce, manufacturing. और हम लोगों ने क्या किया कि लीप देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स लीप फ्रॉगिंग. लीप फ्रॉगिंग होता है बेसिकली कि हम एक फेज जंप कर जाते हैं. इंडिया वाज एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी बैक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारा मेजर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस वाज ऑन एग्रीकल्चर. तुम आज भी देखोगे तो जो पॉपुलेशन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर is huge. However, the contribution in GDP from agriculture is, I don't remember, मतलब 17-20% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. और हम लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया सर्विसेज में. तो correct. प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा पीछे छूट गया, जबकि एक स्टेज वाइज अप्रोच हमेशा होना चाहिए था. राइट, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन. अगेन हेमंत, प्लीज अनम्यूट. Hello, sir. हम्म. Yeah, adding on to my last question regarding FIS, I just had a doubt in this that since the government is trying to increase the discretionary income, so I think they are trying to Increase increase the what income? discretionary अच्छा. by the tax relaxation. So हम्म. they are probably trying to focus on private consumption, right? If I'm not हम्म. okay. So are the FIS allow also in context that previously the public consumption was a lot more public expenditure, so FIS were हम्म. quite interested in that. So are there a bias towards public consumption and private consumption? Is there something in that manner? Do they have a देखो, bias? I mean, clearly keh paana whether do they have a bias or not is very subjective, right? Could be multiple parameters besides our also it's not discretionary income, it's disposable income. If शायद discretionary income मतलब कुछ और तुम मीन कर रहे होगे, but whenever we reduce the tax slab, तो our income in hand increases, right? That's disposable income. ठीक है. Right, right. Talking about your FIS having an inclination towards people having more purchasing power, again, it depends. If people have more purchasing power, definitely they will spend more on A, FMCG सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आता है. सेकेंडली मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा बूम आता है. एंड थर्डली तुम्हारा अपेरल्स. और मतलब बेसिकली तुम अपने लेवल पे इमेजिन करो ना कि तुम्हारे पास पैसे बढ़ जाएंगे, तो तुम सबसे ज्यादा क्या खर्चा करोगे अपना? ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करोगे. लिविंग लोग नई गाड़ी खरीद लेते हैं, लोग नया फोन अपग्रेड कर लेते हैं. तो देर आर सर्टेन सेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. तो मे बी एफ आई एस कैन थिंक इन दैट वे, बट अगेन नॉट श्योर वेदर दे हैव अ बायस और नॉट. Okay, so गुड ऑब्जर्वेशन बाय द वे. all those बोलो. consumption sectors and maybe also finance and insurance as well, maybe, right? राइट. Un- इंश्योरेंस डेफिनेटली. yeah, एंड फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, राइट? सेविंग understood. बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यू वुड बी ईदर पुटिंग द मनी इन द बैंक, एफडी कराओगे, या यू विल पुट मनी इन द स्टॉक. विल डिस्कस एवरीथिंग थोड़ा सा उसके बाद. ठीक है. हाय Understood. हरबंस, बहुत आई वाज वेटिंग फॉर योर रिस्पांस. Yes, sir. Good evening, everybody, and sir, good evening. So when we were reading news before the budget, there were some expectations of various sectors, as well as the major expectation in general was boosting the private consumption, the private investment, and also reducing the tax slabs and like increasing the domestic disposable income. So if we see the budget today, so they were very good at increasing the disposable income. And I think that the tax reforms that will be coming in the next week, as well as the RBI announcements for the tax rates, that will be the deciding factor, would set the tone for the behaviors of the private investment in the future. And I think that the expectations that were made by various sectors like hospitality, the pharmaceuticals, the education sector, they were met
the tone is set because they want to achieve the Viksit Bharat. They know that they need inclusivity and innovation. So I Hmm. think this year is just a start for this kind of budget, and they'll increase more of these inclusion and private investment in the next budget. So this was a good start, I guess, and the expectations were met. So as we were we were listening to the economists also. So we think that we should not aim for a steep growth, but we are growing in a very staged manner. So I think this Right. budget was very nice because it met two of the three expectations that were the major expectations of the economy. Point taken, agreed. But it really depends which economists you were listening to. But again, Yes, so actually, I was listening to some of the comments made by IMF or World Bank economists also. So that was a good, I think, source, a credible source for that, and not the biased ones. I also think because we were tracking the news since the last month, so there were many views that we came across, and the major focus I thought was just consumption. Actual में पैसा होना चाहिए consumer के पास, which is not there in the market still. But the 12 lakh increase in the tax rates, as well as, I guess, the major deciding factor that is still left for the budget, it's the tax reforms in the next week and the RBI tax rate cuts. That would be the deciding factor. We can't be still so sure about the private investment today. certainly we cannot say with full confidence whether the private investment will increase. It really depends कि तुम्हारा disposable income किस direction में जाता है, right? It really depends on the Yes, sir. also the the blood or the gene of the youth right now. Yes, sir. But Actually, one more thing I noticed was that even बताओ. though the budget, the middle class was a bit happy about the budget, but the stock markets were not because the capital gains tax and the various incentives that were being expected by the stock markets were not given in this budget. I don't know for what reason. Maybe they were balancing out on the they were taking the fiscal deficit maybe, so Yeah, that's why they did focus on it. So I think in the next budgets, they will focus on the investment part also and focus on the FIs and FDIs. They're majorly focused on the FDIs right now, not on the FIs. What I saw from the budget. right. But let's wait for the FII's reaction. अभी तो आज Saturday भी था, right? So Yes, sir. only India's stock market was open, so still True. मतलब it has fallen. But let's wait for Monday. Let's see how the market reacts in its full fledged way. But again, good Ye- point. Yes, sir. Thank you so much. That's Yeah, it. Thank you. yeah, thanks. Mohit, want to add anything? Me, sir. Hi. Yeah. So this is more point that insurance sector liberalization I was reading that the Hmm. FIs now can from ownership of 74% to 100% has been given. So Mm-hmm. what kind of we can include we can so you can suggest what kind of impact it will bring the insurance market. So firstly, I'm worried about that they will just exploit it for the cheap labor and take all the profits to their nation. And second, the insurance sector is already a tough market because I think selling insurance in tier two and tier three cities and rural areas is already a big task. So how will it impact that sector? Yeah, देखो insurance purely works on probability. ठीक है ना? Though the business, but you are talking at a very micro level, selling insurance. Let's not go into that detail, but LIC is a very good example. क्या होता है कि इंश्योरेंस लोग लेते हैं, राइट? लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, सो एंड सो फोर्थ. उसका क्लेम बहुत ही कम होता है, राइट? बहुत कम लोग क्लेम कर पाते हैं इंश्योरेंस. तो उनके प्रीमियम्स तो लोग पे करते जाते हैं. तो इंश्योरेंस एज अ मार्क एज अ बिजनेस इज वेरी suited in Indian market. However, the penetration into the rural areas can be questionable, right? However, we see that there are various government-run schemes. Uh, Ayushman Bharat was one of them. ठीक है ना? So इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करेगा, राइट? बट अगेन मार्केट, आई मीन इंश्योरेंस अभी सेल कैसे होता है यार, वो मतलब वो तुम जब एमबीए करोगे तब सीख लेना यार. Yes, I think, but it is a good thing because new companies will come in India market and it will boost employment for the insurance sector only because there are few companies only where people can go right now. I think all Because over it not will be only a good thing. insurance but the entire NBFC. Uh, this is a tough market to crack, right? And Yes, Abhi, I think I was reading one news in which sir, you are lagging. Continue.
Guys, am I audible? Okay, fine. So, guys, we'll have one or two more responses, then we'll have the proper discussion about the budget. ठीक है? Harbans, you have spoken. Tanvi, please, uh, you can unmute and speak. Yes, sir. So there was one connection that I found between the economic survey and हाँ, the budget today. There was mention of the employment sector, like creating more jobs. There was also a stat given that in 2017 and 2018, there was 6% unemployment there हम्म, and 3.2 in the year 2023 and 2024. So there is a lot more focus in the manufacturing sector and हम्म, more focus on the labor intensive sectors, like right, right. Understood. the Good the point. three major sectors that they proposed specifically, like the food Hmm. processing sector, the leather sector, toy sector. Right, right. So there was a major focus on creating jobs and as well as on the maritime industry, like Hmm. 25,000 CR corpus was allocated to create more jobs there as Hmm. well. Also, a lot more focus on the innovation sector and people sector was there, like Hmm. increasing capacity in IITs, the medical colleges, Right. focusing on the ground level on for innovation, like setting up 50,000 labs, Atal Tinkering Labs Tinkerland, yeah. Correct. in the government schools, and also AI Excellence Centers, establishment of AI Excellence Center as well. So Precisely. Yeah. there was this move is basically a very good move, focusing on the ground level, in my opinion. Uh, ठीक है. Thank Good you. observation. Yeah, thank you. Gaurav? Yeah, yes, sir. So I was reading the today's budget. Sir, I read that the insurance sector is going to be the next in that new tax regime because it's also offers a lot of benefits to the peoples who are taxpayers currently, and they are currently they were in a significant turmoil. So now the with the rural people and the lower peoples with those tax rates, they are going to be a demand in decrease for the products which are in currently in lagging behind. So I think that the tax saving instruments, medical instruments, and lots of things is going to be a major short term impact when it comes Hmm. to the products. And I think investor will also be have to be careful Hmm. for investing because it will be a long impact on Hmm. education as well as skilling because as Skilling, we right. या बिकॉज वी हैव टू अपस्किल थ्रू द मार्केट बिकॉज हम अगर मार्केट नहीं देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसका Hmm. मतलब तो मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसका मतलब नए नए जो टेक्नोलॉजीज है वो कैसे स्केलेबल हो रहा है तो मतलब Hmm. वो चीज़ है वो हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और एआई के बारे में भी सर मैं पढ़ रहा था तो वो जो as Tanvi said कि there is a lot of medical seats in medical colleges are going to be added. So I think with the aim of the increasing the seats, I think ये जो बजट है इसका इम्पैक्ट और भी पड़ेगा और जो हमारा एआई है उस पे और पड़ेगा और ये जो एजुकेशन सेक्टर है इसको बूस्ट करेगा सो पर्टिकुलरली तो मुझे यही लगता है कि जो नेशनल जो लैब्स है वो लैब्स जो हाई रिसर्च के लिए उसको और गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा और जो इनोवेशन है और जो स्टीम जो है मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसको भी और मतलब स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा Same. Correct. तो और जो रिपोजिटरी है वहाँ जहाँ रिसर्च होता है जो उस रिसर्च सिस्टम और इनोवेशन सिस्टम को भी मतलब ग्रो करने पे और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि बहुत सारे अभी इनिशिएटिव्स आ जाते हैं तो उनको भी ये करना पड़ेगा बूस्ट करना पड़ेगा तो यही Hmm. मैंने पढ़ा था Nice. Good. Good.
understanding, Gaurav. Thank you for your inputs. Japnit, would you want to unmute? Uh, that's the last response I'll have from you guys. Then we'll have a discussion. I think there is some audio issue. Maybe your device, the mic is not working properly. That's my understanding. But I have read your comment here. We're going to answer that once we start our discussion. Okay, cool. So, boys and girls, thank you for all the inputs. It was very insightful. And honestly speaking, we have already covered around 60-70% of the entire budget in brief. And this is frankly your biggest group discussion ever happened, besides having smaller groups. Okay. So I'm going to present that document that we have shared in the group in the morning. Maybe we'll use that to motivate our discussion further. Again, same kind of a pedagogy we're going to follow. We'll have some points. We'll take inputs from you, and maybe I can pitch in wherever I feel that there could be some uh, greater details is required. Okay, guys, presenting my screen. Please let me know if you can see it or not. Visible? Can some of you unmute or maybe? ठीक है, I'm getting chats notification. So basically, right. So this is the budget document that we usually use in our discussions all the time. And actually, when Gaurav mentioned about STEM, it really gave me a deja vu because I think the STEM wala thing was also covered in the previous year ka budget, and we had a great discussion season, last year season. So again, right, there are majorly four pillars of development, right, for according to this budget, and we also got inputs based on agriculture, right? We talked about pulses and all. There is a emphasis on increasing the quality of pulses and all those sorts of dal and all, because first of all कि जितना ज़्यादा yield होगा उतना ज़्यादा self sufficient होंगे हमारा import dependency बढ़ेगा, not only about pulses but the different food grains that we import. So basically, sustainability is one point. MSME, a great detail has been there about MSMEs, how India is trying to boost the MSME sector through the policies that or the steps which was mentioned in today's budget session. Investment, again, investment in now government is also investing in certain areas, defense, education, social sector, so on and so forth. There is also a reduction in the tax slabs, basically having said that earlier also कि अभी disposable income बढ़ने की बात हो रही है, right? Disposable income जब बढ़ता है तो अगर तुम लोग सबको अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स याद होगा जो हम लोग 1-1.5 महीने पढ़े थे, तो उसमें क्या बात हुई थी कि इनकम के दो मेजरली कॉम्पोनेंट होते हैं, C+S, ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. जो सेविंग्स होता है ना, that ultimately gets translated into investments as well, right? So investment in by private players could be that one, and again जो GDP का जो G होता है, that is the government sector का investment, right? And again exports. Now so India is अभी तो हम लोग फिलहाल net importers हैं, right? But again there are policies in place just say मतलब we could focus on certain goods that we are and we can boost the exports. एक्सपोर्ट बूस्ट करने से फायदा होता है कि हमारा जो बेसिकली एक्सचेंज रेट होता है वो करेक्शन होता है, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड विद सम ज्ञान इन इट. ठीक है. Accelerate the growth, secure inclusive development, enhance spending power. This we know कैसे, right? This will also have a downside, guys. We'll discuss थोड़े से आगे जाके कि what will happen when there is an increased disposable income. लोगों के हाथों में पैसा बढ़ रहा है, and मतलब according to some stat, I think 12 लाख से कम जिनकी अर्निंग है, that comes 85% of our population is there, working population falls in that category. तो basically काफी लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा. उस पे हम लोग देखेंगे कि उसका एक डाउन साइड क्या है. इनोवेटिव प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स अपलिफ्ट हाउसहोल्ड सेंटिमेंट्स. So the very first pillar for today's discussion was, you know, spurring the agriculture, basically the agriculture sector. So there are few measures, few pointers that we could cover here. Is first of all high yielding seeds. So basically there is always a see the charts. Okay.
Hmm. First of all, is the high yielding seeds, right? There is a greater emphasis on having more and more high yielding variety of seeds. उससे क्या होता है कि कम inputs में कम area में there could be an enhanced productivity of our agricultural inputs. So in lesser, basically how to optimize the agricultural land is point number one. And again, self-sufficiency is point number two. And again, to improve or increase the exports could be point number three in it. Enhanced credit card. So Kisan credit card uh, was one of the most popular and helpful policies that came into picture in the agriculture sector. So basically, short-term loans up to 7.7 CR. These are some numbers. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana developing agriculture districts. Again, some 100 focus districts which will be benefiting around 2 CR farmers. कॉटन प्रोडक्टिविटी में भी एनहांसमेंट के लिए बात की जाती है बिकॉज कॉटन इज अल्टीमेटली द रॉ मटेरियल फॉर अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंडिया इज आल्सो booming in textile sector. Secondly, textile is a very labor intensive sector, and India being a labor abundant nation, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इस टाइप के सेक्टर्स हो गए जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इसमें लेबर का बहुत रिक्वायरमेंट होता है और इंडिया में चीप लेबर है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है इफ दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज get boom. Makhana board in Bihar, right? So there was a lot of emphasis on uh, Bihar during this budget. I don't know whether it was intentional or not, but this was all about your agriculture sector. Any inputs, guys? I'm unable to see the chats. I really don't know how to enable it in the in a separate window. You guys can raise hands if you have any inputs. Maybe ha Dhananjay bolo. Sir, I think they also mentioned in the budget that a National Food Institute of Technology will also be established in Bihar, specifically to, boost production, agricultural production. I Right. don't. They have a lot of plans specifically for Bihar this season. Yeah, 42 Lok Sabha seats है भाई. Hmm. ठीक है. Mohit, please speak up. Yes, sir, like you said, the elections are coming up and it's a huge case to win the seats. And also, sir, but I think till they solve the basic problems like security and basic infrastructure, no company will go and invest there. So, like, they don't solve the crime problems and minimum infrastructure, water. No company will be willing to settle there to raise the employees. No one will be able to shift there. So they should focus on that like, first. Sorry, I missed the first point actually. Your voice is a little feeble, so thoda zyada. Can you please repeat the first point? Yes, I was saying this thing, like yes, the elections are coming up, and it has been seen in this budget. Their focus on that is there, but they Hmm. need to come up with the basic things like better police infrastructure and basic infrastructure should be upgraded first. Then only Hmm. will companies will go and invest there. Otherwise, it's no point. You can build airports, you can give incentives, but no one will go if basic infrastructure is missing. Right. So basically, tech and IT infrastructure के बारे में ये बात है. There are no tech parks there. The police is not in place. There are a lot of corruption, so on and so forth. So basically, the entire generation has to, अब इसमें क्या है कि बिहार और मतलब जैसे बीमारो states की बात कर लो. So there is one state which has become a hero in Bimaro state, which is Odisha. A very good example. Odisha Yes, was one of the, बहुत ही उसका economy wise it was very bad. And now when we talk about Odisha, we know what an exceptional city Bhubaneswar has become. It has Puri, it has Cuttack, it has Raulkela. So there are 4 or 5 star cities in that one state. So the ultimate, so that is how I read. So the number of star cities you have in one state, it's a one-on-one relation. जितने ज्यादा star cities निकलेंगे, उतना अच्छा वो state हो जाएगा. So currently बिहार में there is one Patna, ठीक है, गया है, राजगीर है, but these are not very मतलब टूरिज्म वाइज उतना डेवलप नहीं हो पाया. However, there is a huge scope of tourism in those areas. Let's see how far we can go in that direction. But yeah, yes. good observation. Thank you, sir. Guys, chat में मत लिखो, मतलब मेरे को बार बार ना ऊपर से देखना पड़ेगा. I'm not very used to this infrastructure right now. Maybe if you want to raise a hand and speak up, we can always discuss. ठीक है.
So here we talk about आत्मनिर्भरता in pulses. Basically, first HYV seeds की जो बात हुई थी आगे, उसी का एक तरह का extension हो गया basically कि there are some pulses जिसको हम लोग how to enhance the quality of these seeds, जैसे enhancing the protein content, productivity increasing, improving the post harvest storage management. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टोरेज मैनेजमेंट का होता है बेसिकली वी डोंट हैव इनफ वेयर हाउसेज डार्क स्टोर्स इन प्लेस या फिर पीडीएस बहुत पुअर है बेसिकली हमारा. तुम लोग न्यूज में हमेशा देखते रहते हो कि बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खराब हो गया गोडाउन्स में एफसीआई गोडाउन्स में रखे रखे. सो अगर इवन इफ वी हैव बिग वेयर हाउसेस वी डोंट हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन. वो बेसिकली कंपनी फार्मर से तुम्हारे पास आते आते उसका इतना कॉस्ट लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में. सो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system should also be upgraded besides just storage management, right? India Post as a catalyst for rural economy. Again, rural economy is the next big thing, not only from the government standpoint, but also from the corporate standpoint as well. Corporate standpoint में होता है कि basically क्या हो गया कि अभी FMCG companies are focusing entirely in rural economy because yeah 60% of the population. और अभी क्या हो गया कि urban centers में क्या हो रहा है ना कि there is a lot of competition from the established brands and also from the upcoming D2C brands. तो अभी ये FMCG companies ने क्या किया है कि अब नाउ दे आर गोइंग टू द रूरल सेक्टर. इवन मतलब अभी बहुत सारे एग्जांपल तो मिल जाएंगे कि वेयर दे हैव कस्टमाइज्ड offerings, product assortment, specially crafted for the rural economy. So there is again, uh, rural economy would be the next big thing, even from the PSU's point of view as well. Uh, you might pick up credit services to micro enterprises, insurance, assisted digital services. So again, talking about MSMEs, guys, we had a great discussion about MSME, how government has taken or has announced certain steps to, increase and support the MSMEs, furthering, making India initiative more stringent and robust. First point is about credit cards for micro enterprises, card limit for 5 lakh rupees, basically, and they are focusing to issue 10 lakh such cards. So basically, credit card is nothing but a type of लोन और शॉर्ट टर्म लोन दैट दे कैन. क्रेडिट कार्ड का एक छोटा सा लोन ही होता है ना, वो लाइबिलिटी में तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारे बैलेंस शीट में. सो बेसिकली जो इफ इवन इफ क्रेडिट की कमी है फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज, they can always use their credit cards for short-term payments and all. Scheme for the first-time entrepreneurs, right? There is also an emphasis to increase women entrepreneurs from the certain communities from our India, SCSCs, loans up to 2 CR for the next 5 years, right? So again, entrepreneurship में भी बहुत ज्यादा emphasis हो रहा है अभी. Secondly, entrepreneurship इसलिए भी होता है basically क्योंकि वो job generate करता है, right? Even if you are starting a small business, a small firm, you will be requiring, manpower. तो उससे job generate होता है. You will also be taking loans. तो उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा financial institution भी वहाँ का work कर रहा है. You will be serving people. तो वहाँ के भी कुछ pain points तुम solve करोगे. So that's how the entire ecosystem works. Again, they're trying to bring down the cost, also the processes, the different paperwork that is required to start an MSME business. Also, manufacturing, uh, clean tech manufacturing for climate friendly development. Again, focusing on not just manufacturing, but also how the manufacturing can be sustainable in nature. Basically, तुम्हारा जो waste डिकम्पोज होता है, दे पहले क्या होता था कि दे यूज्ड टू डायरेक्टली डिस्चार्ज इट इन द वाटर बॉडीज. उसके बाद देयर आर सर्टेन नॉर्म्स कि यू कैन नॉट डू दिस. उसके बाद कार्बन एमिशन पे भी गाइडलाइंस आई. सो वी जस्ट नॉट हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो हाउ सस्टेनेबल द मैन्युफैक्चरिंग कैन बी, राइट? So yeah, there were three industries that were talked about बहुत ज़्यादा in detail during the budget session also, and we also had initial discussion. अभी few people also talked about these industries. The first was
footwear and leather industry, second was the toy sector, and third was food processing. सो बेसिकली इन सब में सबसे जो कॉमन पॉइंट ये होता है कि ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी लेबर इंटेंसिव। इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरिंग इन अ वे। सो देर इज एन increased basically focus of the government in these sector. Secondly, अभी क्या होता है कि majorly in footwear and toy sector में there was a lot of import dependence, and these are the things that can be naturally achieved in India as well. We have the competencies, we do have the required raw materials, so that's why there is an increased emphasis on these kind of an industries. And also we have the motive of made in India, so these industries could be, the stepping stones where India can be self-sufficient, and also we can be net exporters to the world, right? There was some sort of a changes, first of all, in the classification of the MSME sector, right? And second was the credit availability. So अगर तुम लोग पहले देखोगे, so micro, small and medium enterprises कि इन्वेस्टमेंट पहले कम चाहिए होता था, अभी जो उसका रिवीजन हुआ है अभी थोड़ा बढ़ गया है। बेसिकली 2.5 टाइम्स हो गया। अगर 1 CR का इन्वेस्टमेंट था इन माइक्रो तो अब 2.5 हो गया है। टर्नओवर पहले 5 करोड़ चाहिए होता था, अब 10 करोड़ हो गया। तो दे हैव रिक्लासिफाइड इट बेसिकली। अब ऑब्वियसली तुम्हारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये नंबर्स पहले बहुत, अभी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग राइट नाउ, बट ये जब जिस समय आया था 1 करोड़ डिड मैटर टू पीपल। अभी थोड़ा सा दे हैव चेंज्ड एंड दे हैव reclassified it into this particular नंबर। सेकेंडली पहले जो था एमएसएमईज को क्रेडिट जो था वो 5 CR का मिल रहा था, अभी 10 कर दिया है। स्टार्टअप्स को 20 कर दिया। दे हैव जस्ट डबल्ड द क्रेडिट कवर, राइट? So guys, this was a little bit about the MSMEs, Make in India, and leather footwear and toy industries. Maybe any thoughts, any observations, any feedback on these, or any point that you want to discuss that I missed. You can directly raise or unmute, or then we can. Yeah, yeah, Aminesh. सर ये क्रेडिट गारंटी You are कवर वाला Aminesh या समझ तुम्हारा में स्पेलिंग का टाइप हो गया है? नहीं सर, अमिनेश ही है। ठीक है, ठीक है। सर हाँ ये बोल। क्रेडिट गारंटी कवर वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा अगर और मतलब क्रेडिट क्रेडिट का इजी मतलब वे क्या में होता है? क्रेडिट उधारी। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, एमएसएमई स्टार्टअप्स को भी लोन्स वगैरह चाहिए होता है ना। अगर तुमने फाइनेंस का क्लास सर किया था 1-2 हफ्ते पहले, ठीक है, हम्म। और वो उसको मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितना ज्यादा तुम उनको कैपिटल दोगे या इजीली कैपिटल अवेलेबल करा पाओगे, उतने अच्छी तरह से बिजनेस होता है। देखो, बिजनेस कभी भी घर के पैसे से नहीं होता है, राइट? अगर यस बड़ा सर। बिजनेस करते हैं एमएसएमईज या स्टार्टअप्स, दे नीड टू रेज फंड। और सबसे पहला फंड शायद एंजल इन्वेस्टर नहीं देगा, कोई शार्क नहीं देगा। पहला फंड यस सर। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट से मिलता है, एड मिलता है, ग्रांट मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी फंड करती है, राइट? तो हम्म। या गवर्नमेंट देती है। तो इन्होंने एक कवर बढ़ा दिया है बेसिकली कि पहले 5 करोड़ का था, अब 10 करोड़ देंगे। मतलब ओके समझ गया just to सर। show the intent कि यार look, if हम्म। you want to do business, we will definitely help you and support you in providing credit will not be an issue। and also इसका थोड़ा सा business मतलब as in the process of getting credit और approvals और permits has also streamlined, ठीक है ना? तो अब कहने का ये तात्पर्य यही है कि it would be easier to start a business, क्योंकि अभी 2-3 चीज सॉर्ट कर रहे हैं वो, कि ज्यादा पैसे भी देंगे और तुम्हारा प्रोसेस वो भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, राइट? दैट्स द ओके पॉइंट। सर। सर ये किस बेसिस पे मिलता है, एज इन वी नीड टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल्स और वी नीड टू शो दैट वी नीड दिस मच इन्वेस्टमेंट लाइक दैट, देखो, मतलब वो डिपेंड मल्टीपल करेगा बिजनेस बेस पे भी। होता है कि तुम्हारा लेंडर कौन है, ठीक है ना? अगर बैंक से लेना है, सो बैंक मतलब ये टॉकिंग अबाउट, अगर स्टार्टअप है सपोज, यस सर। तो उसको अपना एक पूरा प्रेजेंटेशन या बिजनेस आइडिया लेके जाना पड़ता है, राइट? कि तुम्हारा बिजनेस है क्या चीज का, उसके पूरे यस बारे में सर। बताओगे, ठीक है ना? हाउ विल यू मेक मनी, फ्रॉम वेयर विल यू मेक मनी, किस टाइम पे तुम प्रॉफिटेबल होगे। एक 10 साल 15 साल का फाइनेंशियल पोजिशन बना के जाते हैं हम लोग, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाउ इज इट addressing the gap if at all it is there,
तो दे आर मल्टीपल पैरामीटर्स। बैंक्स को बहुत कुछ, मतलब बेसिकली बैंक्स पैसे लगाएगी तो उसको पूरा कन्विंस करना पड़ता है। एमएसएमईज का भी अगेन पोर्टल्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, ठीक है ना। इवन छोटे स्टार्टअप्स भी हैं, उनको कॉलेजेस भी फंड करती है। तुम्हारे बी स्कूल भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगेन बिजनेस आइडिया लेके जाना पड़ता है। इवन मेरे कॉलेज में आईआईएम इंदौर में आई 5 समिट होता था, which was jointly organized by IIM Indore and IIT Indore, ठीक है ना। that was nothing but an exhibition, startup exhibition पे। वहाँ पे डिफरेंट स्टार्टअप्स आते थे, अपना आइडियाज पिच करते थे, एंड अल्टीमेटली उनको फंडिंग मिलती थी क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते थे। तो इट वाज बेसिकली क्या था कि इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स का एक मीटअप होता था 3 दिन का। और मतलब यू कैन गो अटेंड लेक्चर्स, डेमोस देख सकते हो। उसके बाद जिसको जैसे कनेक्ट्स बनेंगे वो अपना आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड गवर्नमेंट का भी देर आर डिफरेंट वेज, आई मीन पोर्टल में भी रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट रन इनिशिएटिव्स भी होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगेन दैट्स हाउ यू रेज मनी, राइट। Thank you so much, sir. Much. ठीक है। एनी अदर पॉइंट, अभिरूप? नाइस, डीपी। Uh, Yeah, actually, I had, matlab, it's not related to this particular slide, but मेरा एक, I'm confused with one thing. So, हम्म if you're saying that the like particular focus is on certain industry like toy manufacturing or leather, हम्म तो हम्म बजट जो है वो हर साल आएगा, तो how do the government quantify this thing कि उन्होंने जो actions, जो उन्होंने plans रखे हैं, वो हम्म वो कितने, लाइक वो 2 साल के बाद उसको देख रहे कि हाँ अब इफेक्ट आया, या फिर 5 साल के बाद आया। तो ये जो सारे इस बार का बजट है और इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए किया है, तो हम्म। उनका वो गोल क्या है कि हाँ चलो हम इस साल हम एनालाइज करेंगे कि इसके बाद मतलब ये डिसीजन अच्छा था या बुरा था, देखो, मतलब ओवरऑल मैं पूछना चाह रहा था। बजट की जो पॉलिसीज होती है ना, वो हम्म। इतनी इजीली डिसकंटिन्यू नहीं होती है। ओके। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तुमने देखा होगा कि इवन द पॉलिसीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट, वो पॉलिसीज आज भी चल रही हैं, करेक्ट। राइट। देयर कुड बी सम एडिशन, सम मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, या नाम चेंज कर देंगे। हम्म। However, the policy is not eradicated or removed entirely because that is going to harm some sentiments, right? करेक्ट। So that is one point कि policies ज्यादा changes नहीं होती है, वो कंटिन्यू करती है। इवन इफ तुम इस साल की भी पॉलिसीज देखोगे, तुमने वो सारे नाम पहले सुन रखे हैं, करेक्ट। राइट। एंड अगेन फॉर तुम्हारा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि मैन्युफैक्चरिंग में वी टॉक्ड अबाउट टॉय इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, वी डू हैव सेक्टर रिपोर्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बनती है। आईबीएफ एक वेबसाइट है, राइट। वहां पे सारे इंडस्ट्रीज के तुम्हें इंडिया के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। यू कैन ऑलवेज सी की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या रहा है, व्हाट पॉलिसीज वर इम्पैक्टिंग दैट, वो एक तुम्हें ब्रॉडर पिक्चर बनाएगा। तो देर आर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, तुम एक बार जाके चेक करना, तुम्हें सारे इंडस्ट्रीज के बारे में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द पॉलिसीज, लाइक कौन सी पॉलिसीज कहाँ पे कैसे काम कर रही है। गुड पॉइंट कि एक साल में क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, दीज आर वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। करेक्ट। सबसे पहली बात है कि वी आर स्टैंडिंग एट ऑन February 1st, अब तो 2 फरवरी हो जाएगा 3 मिनट में। हम्म। बट इस ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल से, राइट। करेक्ट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, देखो, इंफ्रा रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होती है ना, चाहे फिजिकल हो चाहे सोशल हो, उसका इम्पैक्ट अगले 10 साल में दिखेगा, राइट। करेक्ट। तो इसीलिए अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसका क्वांटिफाइबल डेटा हमारे पास कब मिलेगा। बट अगेन I'm sure कि in the next 5 years you will see some visible changes, मे बी जो हमारा सेक्टरल कंपोजिशन होता है ना, अगर हम लोग जो पाई चार्ट देखते हैं, तुमने देखा होगा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का, दैट विल somehow change in the next 5 to 10 years. So that could be one metric, very crudely I'm defining, but there could be multiple parameters जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, समझ गया। या दैट, या थैंक यू। ठीक ठीक है, ठीक है, दैट्स अ गुड डीपी मैन। या थैंक यू। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन था पिछले वाले से? आए मोहित, बता। Yes, sir. I think it's a very good time for us to develop our leather industries and manufacturing industries because, कैन यू ब्रिंग द uh, माइक क्लोजर टू योर माउथ इफ यू आर यूजिंग एन ईयरफोन? yes, now it's audible.
You were audible before also, but yeah, but we can manage. Yes. So I was saying it's a good time because Sir Donald Trump has also stopped the foreign investments in countries, foreign aid for Bangladesh and Pakistan. So it has put their industries on hold, like manufacturing of textiles and handicraft in Pakistan. So it's a good opportunity for us to gain momentum in that, and he's in no rush हाँ to हाँ even remove aid. even Bangladesh. So एक time पे when I was in my graduation back in 2016 to 19, so Bangladesh का economy was doing very well as compared to India, even Sri Lanka for that matter. Yes, Bangladesh they were saying became the hmm, बोलो competitor of बोलो India. They said हाँ they will हाँ become the competitor of India's textile industries. But now correct. with the revolt, the stopping of USA, I think it has come to a big halt. And for the next Hmm. 5 years, we have a good. Yeah, definitely, definitely. That's what we डिस्कशन के सबसे पहला पॉइंट ये था कि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड जितना हम लोग रीप कर सकते हैं कर लेते हैं बिकॉज वंस आवर इकोनॉमी विल बिकम ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट विल गो फॉर अ टॉस उसके बाद आई थिंक मेरा रीडिंग ये है कि वी कैन फोकस ऑन द सर्विसेज अगेन वंस वी क्रॉस 20 Yes, 45 or 65 whatever. Talking about Bangladesh and Sri Lanka, initially they were doing really good. Per capita GD was better than India. However, जो main problem वहाँ पे आया political unrest and disturbances, that really had made all the change in their lives and in their economy. India still has a very good chance, to again there is momentum, there is global demand, right? And India का image is मतलब बुरा नहीं है in terms of anything, right? मतलब tourism अच्छा है यहाँ का. There is some sort of a political stability. Vision है. We have a very good external affair minister. So overall, India का image in the global level is really good. And let's see what happens and what could be the possible outcomes of these policies. Too early to predict now. ठीक है ना? But we can yes. always be hopeful. Thank you. Yes, Utkarsh. हाँ ठीक है. So, like, if we see in a sense that why we are focusing on manufacturing is because we want to reap the benefits of China plus one policy. Can that be हाँ a viewpoint? देखो चाइना का प्रॉब्लम वही हुआ गया था कि वो एजिंग पॉपुलेशन में आ गया था वो उनका खुद का पॉलिसी उन पे भारी पड़ गया दैट इज पॉइंट नंबर वन बट नॉट ओनली चाइना बट देयर वर अदर स्मॉलर इकोनॉमीज लाइक आई टोल्ड अबाउट लाइट वे डिस्कस अर्लियर की जो बांग्लादेश थे जो श्रीलंका था या जो भी लेबर डिपेंडेंट नेशंस थे ना जहाँ पे चीपर लेबर अवेलेबल था तो उन्होंने फिर वो जगह लेने की चाहा however they could not utilize that opportunity fully even India could not utilize that opportunity fully the the whole idea is कि we have to fill the gap मैन्युफैक्चरिंग में हमें किसी तरह से एक अच्छा स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है आफ्टर एग्रीकल्चर ठीक है ना एग्रीकल्चर हैज अ वेरी स्मॉल शेयर इन आवर जीडीपी अभी इट इज entirely services driven if we will have some sort of a balance between these three sectors na I think overall impact on the GDP plus uh, vis-a-vis our competitors will also be uh, would be a good point right ऐसे केस में इनकम डिस्पैरिटी भी थोड़ा कम होगा शायद हाँ सुना हाँ था इनकम और डिस्पैरिटी कम होगा और दूसरा इम्पैक्ट ये होगा जैसे बांग्लादेश इज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो राइट टेक्सटाइल वाला फोकस इंडिया पे आ जाएगा सो बांग्लादेश यूज्ड टू बी अ ग्रेट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर नाउ इफ वी हाँ फोकस ऑन कॉटन तो हम लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस जगह नॉट ओनली टेक्सटाइल फुटवेयर वगैरह सब में Yes. मतलब बेसिकली तुम दिमाग में रख लो कि जितने भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं ना वहां पे इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस बिकॉज अभी लेबर चीप है अभी लेबर थोड़ा सा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पे है हाउएवर जैसे जैसे हमारा भी इकोनॉमी इंप्रूव करेगा हमारा लेबर भी विल विल बिकम स्किल्ड एंड वो भी दूसरे तरह के काम में जाएगा राइट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन that will happen in the manufacturing space also the kind of human resource requirement will also change with time ठीक है And however also there अभी is तो a tendency, yeah. So there is a tendency when countries become developed, they start talking about carbon footprints, as like we see in the West. हाँ हाँ, मतलब even the underdeveloped are talking about carbon footprint ठीक है that's a very different story altogether Yes.
ठीक है। सो अगेन हमारा एग्रीकल्चर कवर हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई कवर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, दैट वाज द फोर्थ पिलर, राइट? सो देयर आर वेरियस स्टेप्स, कॉमन पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किया। ठीक है, विच इज सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0। अगेन अभी लास्ट टाइम किसी आई थिंक अभिरूप का ही क्वेश्चन था, राइट? कि पिछले वाले जो पॉलिसीज थे उसका मेजर समझ में नहीं आता या पता नहीं चलता है। उत्कर्ष, यू वांटेड टू से समथिंग? नहीं, ठीक है। सो देखो, ये 2.0 यहाँ पे आ गया, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना है कि कोई भी पॉलिसी इतना जल्दी डिसकंटिन्यू होता है, उसका हमेशा उसको थोड़ा ट्वीक करके उसका 2.0 वर्जन बना के भी प्रेजेंट, एंड वी do have certain reports, metrics to analyze the impact of each. All these are not the policies जो कि एक साल दो साल में you can have an impact. But obviously, if we look at the bigger picture, after 5 years, after 10 years, वो कहीं ना कहीं changes दिखेंगे. Secondly, expansion capacity of IITs. Again, there is a lot of focus on इस बार to develop the skill development of the individual. So IITs and IITs की सीटें बढ़ाने से, medical colleges में सीटें बढ़ाने से ये होता है कि since our population is also growing, there is a need for more and more technocrats, doctors, right? And IITs पे सीट बढ़ा रहे हैं, तो basically there is an emphasis की to enhance the technical education, right? Daycare centers in all district hospital. अब देखो, छोटे डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि अभी देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वुमेन हु कैन नाउ पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स इफ वी हैव, अगर ये पॉलिसी ठीक से लग गई, वी हैव प्रॉपर डे केयर centers. तो women who you must have seen in the construction sites, women carrying their kids at their back and also doing the job there also. So if we have some kind of a system like this, there could be an increased women participation, women labor force participation, and the more women will participate, the household income will also double or increase by a certain delta. The more income is there, more consumption would be there. There, वो एक cycle होता है, right? कि your consumption will become my income, my consumption will become someone else's income, and there is an overall growth in the economy. That could be one of the outcomes of it, right? आईएम्स में सीटें तो बढ़ रही हैं यार, मतलब किसी ने आईएम में हर साल सीटें बढ़ती हैं। इवन आई हैव सीन कि आईएम में सीटें खाली भी होती हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम वाज वन, वो बेसिकली डिजिटाइज करना है सारे बुक्स को फॉर स्कूल लेवल. नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किल ट्रेनिंग, राइट? अटल थिंकिंग लैब, आई थिंक वी all spoke about it. 50,000 labs to be set up in government school, basically to uh, encourage innovation at a very young stage, right? Center of Excellence in Artificial Intelligence, there is an announced budget of 500 crores. ठीक है? Broadband connectivity in government schools, again internet रहेगा. There is uh, मतलब basically to modernize the education system, to bring it at par with the private schools or with at the international level पे कैसा पढ़ाई हो रहा है उस पे to have that level of comparison could be one of the reasons. Expansion of medical education, like we have increased seats in IITs, now we will increase seats in AIMS. ठीक है? PM Swarni to revamp enhanced loans from banks, UPI credit cards, and welfare of online platform workers. Here we सबसे पहला पॉइंट जो आया था गिग इकोनॉमी वर्कर्स का, ठीक है? तो वो इसके थ्रू होगा, ई श्रम पोर्टल बेसिकली उन अभी सबसे अच्छा, लेट्स स्टार्ट दिस वे. व्हाट इज गिग इकोनॉमी और हु आर गिग इकोनॉमी वर्कर्स? हाथ उठा लो प्लीज. हाँ, स्वामी ज्योति. So gig economy, as per me, I guess the delivery boys, Yeah, or good, some good. people, yeah, some people who are not professionally employed by the company but works for a company. Hmm. जिनको मतलब कोई मतलब मेडिकल सपोर्ट या फिर जो हमको जैसे कुछ मतलब बेनिफिट्स मिलती है पीएफ वगैरह, वो उनको नहीं मिलती. Right, 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 right. Twinkle, please. Sir, gig economy workers are informal workers, Right, those who do temporary jobs like right. Swiggy delivery people, and also
Uber sharing, Uber Right, drivers, or right. So, just to other make gig. right, correct. Yes, Mera, please go on. Yeah, so gig economy workers are those basically who work in a freelance setting. They do Right, not get a fixed salary. They right, get the income they generate is proportionate to the amount of work they do. For example, there's a video editor. If he charges right. 3,000 for one 30-second reel, so if he edits in a month 10 reels, he gets 30,000. If he edits 5 reels, he gets 15,000. That's it. Right, right. Wonderful. Yes, Would it be right to say that gig workers are the workers who work on contractual basis? contractual basis, right? Everything is contractually binded, right? Even if No, you are instead of being permanent employees, they hmm, work with several companies on a contractual basis because they are not yeah, permanent employees, right? right. So technically speaking, is it different from? Matlab, are these two things different? Working on a contractual basis and working as a full-time employee. I'm Yeah, asking this. very different. हाँ तो I You guess want it me would to be tell right to how? say ना. हाँ. Dekho, anyone who is not on the payroll of a company is हम्म. a gig employee. Okay. हम्म. If I and you are in payroll, we'll be entitled with PF. We will be entitled with some sort of an insurance. We have to pay income taxes, right? Basically हम्म. TDS. Uh, fourth हो गया, we will have some labor laws in picture, right? We will have some laws given by the state government, some rights, some freedom to enjoy. ठीक है ना? Basis If we were and to define gig workers or gig economy in uh, in a nutshell, so what would that definition look like? you can pick any that was discussed that people responded, right? अच्छा, so there is no definite definition as such. ये सब मिला जुला कर कैसे बोलना रहेगा? Yeah, but whatever understanding you have, first of all, they are not on the payroll. Secondly, these are informal Mhm. workers. Third is their work is proportional, their pay is proportional to the amount of Work दे job दे. work they do. They don't have Employed any there. benefits or benefits from the company in terms of insurance, PF, so on Hmm. and so forth. They can work anytime. They can go out anytime. Okay, thank you. ठीक है ना मतलब आई डोंट मीन मतलब कि मतलब दे अप टू देम ना अगर मैं रैपिडो राइडर हूँ आई कैन चूज टू बी ऑफलाइन फॉर द नेक्स्ट हाँ, 7 वीक as per my will. या विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन राइट आई डोंट हैव अ बॉस एंड इसमें True. सेल्स का प्रेशर नहीं होता ठीक है ना उसके ऊपर है बेसिकली गिग गिग ऑन में कंसेप्ट ये था कि इट कैन नॉट बी इट वाज नॉट टू बी टेकन एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ठीक है ना एंड गिग का कल्चर भी शुरू हुआ था थ्रू ऑल दोस performances, acts that you see on stage, whether you know not only the comics, but also when you go to some restaurants, some restaurant bars, you see a group of people, singing in a band. That is also gig work. Stand-up comics is also a gig work, right? Okay, Mohit. Yes, sir, just a small question, sir. The food stall we saw seen in our near our house, are those a क्या gig बोल work? food The food stalls. stall we, yes, That is are they business, ना? coming? That is business. That, that's business. ठीक है ना? मतलब food stall के तो you can take a kirana store also. You cannot call that Yeah, kirana store a gig worker, right? yes, my food stall in the sense the burger stall, the burgers, momos, is type, or the नहीं people नहीं who sells, मतलब but I mean these are मतलब different from a gig economy um, worker, right? Right. these are small. क्योंकि या क्योंकि वो आई थिंक you know मतलब even if you are a Swiggy delivery boy, there is some sort of a contractual like I think someone mentioned Abhirup there. There is some sort of a contractual agreement, right? Some sort of paperwork is there. ठीक है? Even if you're a Rapido driver,
बट वो चीज वो मोमो स्टॉल मतलब दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट यार मतलब नॉट टू बी कंफ्यूज। और इसमें क्या लिखा हुआ है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। वो चीज थोड़ा दिमाग में रखना है, मतलब बेसिकली ऑल द ऐप बेस्ड, राइट। Okay, sir. Okay, thank you. Social media influencers, good point. I don't think that these are gig economy. People from the labor, मतलब gig economy point of view से मत देखना, that's a very different category. However, if they are doing some shows, जैसे कि तन्मय भट्ट is a social media influencer, one of my favorite comics. But when he's performing on stage, or whenever he's performing on stage, that is his gig work. ठीक है, ठीक है. I think we have spent good time in this particular slide. So now we have spoken about agriculture, we spoke about MSMEs, we talk about upskilling the people and also about the labor force. Now we will talk about investment in people economy, the overall picture, right? So first point is that although this is a very badly made slide, I don't like it much. But let's try to decode it. First of all, is support the states for infrastructure development. So there is a push from the government to the states that they should also develop infrastructure. Basically, क्या होता है ना कि if if there is a tier one city or a metro city somewhere, there should be also an a periphery which should also be developed. Basically, take for example the case of Delhi. Delhi is the national capital of our country, but we saw developments in the periphery of those regions as well. If the states or the cities or the regions surrounding the mega cities are not developed, there is a good chance that the particular city will also collapse. Okay, so there is always a pressure or encouragement from the central government to develop the state's infrastructure as well. It could be physical or social, right? Physical is basically building of highways, roads, so on and so forth, right? And abhi highway wale pe bhi I'll give you a very good picture that what is happening. Uh, uh, and even if the social infrastructure, basically education and healthcare, right? Asset monetization plan of 2025-30 launched to claw back capital of 10 lakh crore in the new projects. किसी को इसका मतलब पता है क्या? मतलब what is asset monetization plan? If you want to take a jab, मोहित तुमको कुछ बोलना है क्या? या फिर भूल गए हो रखना हाथ? Hmm. Let's have a look at the chat also. See. So basically, what is happening? How many of you are fond of, driving cars or riding bikes on highways, or do long haul travels, basically 200 kilometers, 300 kilometers on highways, traveling between two cities? ठीक है, ठीक है, ठीक है. Guys, you can raise hands. पता है क्या है ना, chat का is a different window that is getting open, तो मेरे को दो तीन विंडो navigate करना पड़ता है. ठीक है, ठीक है. So अभी okay, I think Swami Jyoti, I think you have spoken before. Shreya, would you want to speak up कि कहाँ से कहाँ do you travel? Yes, sir. It might be related to like when the government makes road highways and then they Hmm. are charging on toll Right, tax. right, That right, right. yes, it monetizes. That is one point, but that also depends on the model. If that is a PPP project, Hmm. public-private partnership, the the government may not be getting any money out of it, right? But that's a good point. What if a completely straight government made highway, toll collection is one point through which it can claw back money? Yes, Saranga, please go on. Sir, asset monetization plan, could it be like government companies are privatized? Like, for example, Air India was sold to private sector. Then, That is not exactly asset monetization, yeah. Not really, but ठीक है, मतलब we'll see.
uh, what are the responses are. Twinkle, please. Sir, asset monetization is to use the assets of government which have not utilized enough Hmm. to bring it back and to help I'll to give you a make very it easy example. Chalo. okay. So basically, the when I was discussing about highways and road infrastructure, अभी if you travel from Delhi to Jaipur, अरे यार ये क्या कर रहा है मतलब Kishan, I like your signature, but I think this is not the right forum to do this here. Maybe you can हाँ, स्क्रीन से भी हट जा. Hmm. So I'll tell you about oil marketing companies and NHAI. So uh, you have you seen those large petrol pumps on the highways which will have a food court attached to it? If yes, please write yes or raise hands. Right? That is one of the examples of asset monetization. So what NHI is doing right now, or NHML, uh, that they are awarding these sites to the OMCs, right? Oil marketing companies. So oil marketing companies, what they do is they take the huge land parcel, they will make a fuel station from it on it, and they will also try to monetize the entire land parcel in whatever way they can do, given that they get the required permits and approvals, and it should not break the guidelines of PESO or NHAI. Basically, they cannot set up an alcohol shop over there, or they cannot sell cigarettes over there, or they cannot allow cigarette consumption over there. They can sell cigarettes in packets in the C stores. But again, that is one of the example to monetize the asset. क्योंकि बहुत बड़ा land parcel होता है ना. They can make small stores, QSRs, restaurants, and ऐसा होता है. You must have seen in Mumbai, Delhi to Murthal wala stretch also, Mumbai to Pune wala stretch also, Kolkata to Durgapur wala stretch also, right? Also, the one highway, Bangalore to Chennai also. So this is a huge nationwide phenomena, or a change that we are seeing right now. Yes, Aminish, बताइए. Sir, stock points are also one of the things that have recently been added in the national highway schemes. Stock points क्या होता है? Sir, like stock points, as we can say, Amazon का warehouse हो गया, Flipkart हो Yeah, yeah, गया, yeah. हाँ हाँ, dark stores ना. और सर लाइक मर्लिन का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आ रहा है जहाँ पे वो लोग कॉमर्शलाइज कर रहे हैं लैंड को, फिर बिग बिग इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं. Right, लाइक दे right. आर ट्राइंग टू कॉमर्शलाइज इट एंड गवर्नमेंट हैज एन एडवांटेज फॉर इट. जीएसटी है, फिर और भी टैक्सेस है, प्लस रेंटल है. होटल्स एंड ऑल भी बिल्ट हो रहा है. हाँ सर, रेंटल है. So क्या होता है ना कि ये जो F&B बिजनेसेस होते हैं या फिर जिस तरह के भी अदर बिजनेसेस होते हैं, उनका एक कट मिलता है NHAI को. ठीक है ना? और रेवेन्यू का कट मिलता है. सर तो ठीक है. तो जितना ज्यादा वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या फिर रिटेल आर्केड शॉप धंधा करेगा, उतना ज्यादा कमाई सरकार को भी होगी. तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट बनाए. ठीक है ना, वॉर्मशेल बना के दे दिया ओएमसीज को. अब क्या है कि वॉर्मशेल बना के नहीं देती, अब ओएमसीज को खुद डेवलप करना पड़ता है. तो अगर इनिशियली उन्होंने एसेट बना के दिया तो एनएचआई का तो इन्वेस्टमेंट किया ना. और उससे इनिशियली क्या होता था कि ओएमसी रेंट देती थी, एक फिक्स रेंटल मिलता था हर साल. अब क्या हो गया कि अब ये अलाइड बिजनेसेस भी खुल गए उस जगह पे. तो उन अलाइड बिजनेसेस का भी एक कट, एक रेव शेयर जाता है एनएचआई को, एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी. यस, अभिषेक लिटमस. Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग. So one way to look at is like I come from Faridabad where we have metros. So prior to past few years, there were like just the metros and nothing else. But recently, DMRC has started to lend the uh, it has started to lend the land to players like Zudio website, wherein they are able to earn rent over it. And हाँ if हाँ. we look at it, the likes of Rajiv Chowk Metro or CS, they have a lot of food courtyards, and they're getting a lot of rent from there as well. I'm glad you did not take Kashmiri Gate as an example. That's a very shitty metro station, by the way. ठीक है, good example. Similar in case of, I think, airports also, Yeah, definitely. in railway stations also, right?
wherever there is government investment and whenever they are getting something out of it, that's called plowback or asset monetization. So I think we discussed this point. Yes, Dhananjay, बोलना है कुछ? सर मेरा क्वेश्चन था, सर जो ओएमसीज होते हैं वो भी फिर गवर्नमेंट को कट देते हैं अपनी इनकम का, बिकॉज दे माइट बी सेटिंग देयर पेट्रोल रेंट पंप। रेंट देते हैं NHI को। अच्छा, कट नहीं देते लेकिन। डिपेंड करता है, मोस्टली रेंट रहता है, फिक्स रेंटल होता है। और जो वहां पे ओएमसी जो बिल्ड होते हैं उधर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो अपने रेवेन्यू में से कट देते हैं एनएचएआई को। दोनों अरेंजमेंट होता है, MGB होता है या फिर रेप शेयर भी होता है। ओके, थैंक यू सर। और वो डायरेक्टली नहीं देते हैं, डायरेक्टली NHI को नहीं देते हैं। अगर अच्छा, तुम्हारा पिज्जा हट या फिर टैको बेल या फिर तुम्हारा मोती महल ऑफ द वर्ल्ड खुला है वहां पे, तो वो रेंटल देगा OMC को। OMC जो कॉर्पस जमा करता है उससे कट देता है, राइट? ओके, ओके। द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट इज बिटवीन an OMC ओएमसी एंड द and that रेस्टोरेंट्स। restaurant. Right. ओके, Good. एंड द ओएमसी गिव्स द मनी टू द एनएचएआई आफ्टरवर्ड्स। Yeah. Full disclosure होता है obviously. ओके, Uh, थैंक यू सर। all marketing company. ठीक है, अगेन देर आर डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स है यार, जैसे जल जीवन मिशन बेसिकली टू कवर, मतलब वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड है ये। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंसेंटिवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, so on and so forth. Second is urban challenge funds, again growth and development, water sanitation, ये सब में there is some sort of a focus this year, and we have also given some numbers, 1 lakh CR, 10 CR। मतलब ये numbers शायद तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, बट अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज हो क्यों रहे हैं। So maritime development fund to develop the marine wala part, also covered in the initial sector. Nuclear energy wala part was also covered. Udan connectivity, basically airport connectivity, further needs of Bihar. So basically इस बार के बजट में बिहार पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, not only from the political standpoint, but again we know for the fact that Bihar is lagging behind, and again उस because uh, उस it's a very old state, right? And बिहार को अभी जहाँ पहुंचना चाहिए था वहां पे नहीं पहुंच पाया है। मतलब गिवन द उसके सेम कंपैरेबल के स्टेट आप देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो या उड़ीसा देख लो, कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो सी सर्टेन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो जो उसके कंपैरेबल में थे। दीज ऑल स्टेट्स आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ GDP, स्टेट GDP, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव स्टार सिटीज। बट बिहार में देर इज, मतलब वैसा कुछ निखर के नहीं आया, तो दैट्स व्हाई देर इज सम एम्फोसिस ऑन बिहार एज वेल दिस टाइम। स्वामी फंड, again, to 15,000 crore for expeditious completion of 1 lakh dwelling units through blended finance. Okay. So again, sure, we are talking about um, again, the emphasis on fellowship and all sorts of PhD programs. ठीक है ना, there is in IITs and ISCs. अ, ये इनोवेशन वगैरह और ये रिसर्च में हमेशा से गवर्नमेंट का फोकस रहा है। द मोर स्किल्ड वर्कफोर्स विल बिकम, और ये क्या होता है कि दीज पीपल हु आर इनटू PhD और दे आल्सो बिकम वेरी गुड SMEs आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, अभिषेक क्या बोलना है बताओ। Sorry, sir, I forgot to lower my hand. तो ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन, अगेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, नेशनल जियोस्पाशियल मिशन डेवलप फाउंडेशन जियोस्पाशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग PM गति शक्ति। आई मीन अ लिटिल, थोड़ा ज्ञान वाला साइड है ये। एक्सपोर्ट प्रमोशन, राइट, भारत ट्रेड नेट, नेशनल फ्रेमवर्क GCC, अगेन ग्लोबल कंपैटिबिलिटी कंपनीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी are also in a way trying to enhance the infrastructure of warehousing, especially in the air cargo segment. ठीक है ना? Hmm. So there are few reforms, especially for the sectoral development. सबसे पहला is FDI limit in the insurance sector. I think we had this discussion कि अब 74 से 100% हो चुका है। Second is rationalization of requirements procedures for speedy approval of company mergers and acquisition का जो process है
सो वो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। बेसिकली मर्ज होती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिनर्जी ऑफ टू कंपनीज, बेटर efficiency, better productivity. Revamp of KYC, again this this point is also discussed कि KYC का एक जो प्रोसेस है उसको यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, एंड वो मल्टीपल केवाईसीज नहीं होगी कोई एक चीज जगह पे। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। जैसे अभी क्या होता है कि हमारा एक क्रेडिट स्कोर बनता है, राइट, जिसके बेसिस पे हमें क्रेडिट्स या फंड या लोन मिलते हैं। तो वैसे भी एक रूरल सेक्टर पे भी एक तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग फंड्स, एंड मतलब किसी को भी लोन रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तो माइक्रो लेवल के लोन्स चलते हैं, मतलब कोई 25-30 लाख का लोन लेके नहीं आएगा। यहाँ पे जो रूरल सेगमेंट सेक्टर में जो बेसिकली एमएसएमईज, जो एनबीएफसी होती है, वो उनका जो टिकट साइज होता है काफी छोटा होता है। पहले 10,000 हुआ करता था, कहीं कहीं 1 लाख हो गया, अभी शायद 5 लाख हो गया होगा। बट दीज आर सम रिफॉर्म्स टू फ्यूल द ग्रोथ। टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, ये तो क्या नहीं है। हम्म So there was some changes in the tax structure. I think started our discussion from the that premise also. कि there has been some changes in the tax structure. Basically, सबसे tariff rates कहीं पे हटा, not more than one cess surcharge. सो बेसिकली क्या होता है कि सेस सरचार्जेस क्या होते हैं ना, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को बढ़ा देते हैं। देयर इज एजुकेशन सेस, देयर इज स्वच्छ भारत सेस, देयर इज एन नंबर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाते हैं। तो उसको कम करेंगे तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हम खरीदते हैं या तुम खरीदते हो, उसका प्राइस कम हो जाएगा। ये सेस या हर चीज में नहीं लगता है, देयर आर स्पेसिफिक गुड्स जहाँ पे सेस और सरचार्जेस वगैरह लगता है। Okay, some exemptions in Make in India, basically LED, LCD TV, looms, textile, capital goods, lithium ion battery. So, so it will also have an impact in the stock market also, right? Exemptions हो रहे हैं for certain sectors, जैसे कि textile, capital goods हो गया। So जितने भी companies इस sector में आएंगी, तो उनका मंडे को चार्ट, कैंडल चार्ट देखना, you will see an upward trend, ठीक है। Promotion of MRO exemption of 10 years on goods for shipbuilding, shipbreaking, basically वही again for import and export purposes, export promotion, duty free imports for handicrafts and leather sectors, basically cost को कम करने के लिए। Trade felicitation to limit fixed to finalize or provision of investment, yeah. Again, this was an important point. Improved access to life-saving medicine, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट ये आई थिंक कैंसरस डिजीज के लिए ज्यादा फोकस था। बेसिकली 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन exempted फ्रॉम दैट लिस्ट, 6 medicines in 5% duty, 37 medicines in 13 new patient assistance program in exempt list, right? Hmm. Oh, like this was for indirect tax and now we are talking about direct tax. इन दोनों का मतलब क्लियर है क्या तुम लोगों को? What is a direct tax? You can raise your hand if you want to speak up. चैट भी चलेगा, मोहित के अलावा कोई और है यार, अगर कोई जगह हुआ है तो। You still have 86 participants, that's a good number. Yes, Roshan. Yeah, good evening, sir. जब तो गुड नाइट हो गया, Indirect गुड tax is the इवनिंग। tax which is collected from the income which is earned by an individual by the government. Like if a person is a, I'm sorry, sir, दिस वाज फॉर व्हाट टैक्स? direct tax. हाँ ठीक है। Yeah, the direct tax is the tax which is collected from the individual on हम्म the on basis of their earnings. In हम्म if we can, if we want हम्म to tell in short, एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? indirect tax is a tax which is not collected from this from their earnings. But apart from what they expend, like हम्म this, that they're spending on something, so the government will take tax from them, like GST and that kind of ठीक है, things. धनंजय, would you want to Actually, add depends on anything else?
it depends on the expenditure of the individual. Right. Right. Agreed. Sir, I think the major difference is that in direct tax, you cannot actually pass on the burden of the tax on someone else, whereas on indirect tax, you can actually pass on the burden on someone else. Like if a shopkeeper has to pay tax to the government, he can charge that GST from the customer obtaining it, and at the end of the day, he will have to pay GST to probably, if he is procuring raw materials from somewhere else, so he'll be paying GST to that guy, whereas the burden of the GST that he would be paying to the person from whom he would be procuring the raw materials would be passed on to the customer. So I think that's the major difference. Right. Right. Good point, sir. Roshan and Dhananjay. Basically, the tax that we pay during the time of generating income is in direct tax. And whenever the type of tax that we pay when we spend money is called indirect tax. That's a very crude way of defining taxes and to understand. So basically, GST, VAT, everything that is spent during the time of consumption is your indirect tax. Income tax, wealth tax, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारा चीज तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स होता है. ठीक है. So there has been a change. STCG and LTCG would also come under direct tax. अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल, हाँ हाँ Yeah. यार वो तो इनकम टैक्स का ही पार्ट हुआ ना. No, like that also come मतलब हम उसमें भी earn कर रहे हैं तो directly उस पे भी tax दे रहे हैं हम. So that लॉन्ग is टर्म also, कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हो ना. yeah. So हाँ we तो are gaining money and we are paying taxes on that. हाँ तो वो इनकम टैक्स के ही पार्ट में आ जाता है, डायरेक्ट ही है वो. अच्छा अच्छा ठीक है. ITR फाइल करोगे ना. हाँ हाँ उसमें आता है ना. हाँ हाँ. तो वो पोर्टल भी इनकम टैक्स पोर्टल में ही दिखता है ना जब तुम ITR फाइल करने आते हो तो दैट इज अ Yes. पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स ओनली. ठीक है. So, guys, I think the most awaited section was this when we were having our discussion internally. So, there is a massive change in the tax structure right now. So, earlier in the old regime, up to 7 lakh rupees, जिसका भी annual salary या फिर earnings था, उस पे there was an exemption कि उसमें tax नहीं लगेगा. This limit has been increased from 7 to 12 lakhs, right? And for salaried class, 75,000 is additional standard deduction. And for salaried person, 12,75,000 तक इसका basically earnings है annual from all sources, not only from salary. या फिर अगर business की बात कर रहे हो तो annual earning पे there is no tax, right? People earning more than 12 lakh would be eligible for a tax, and there is some margin relief that has been given by the government. Basically, अगर आपका 12 lakh is till 12 lakh, this is again, I'm very interested to see the charts. Yeah, mostly you'll be able to see the recordings, although this is the first time I'm taking session alone. But this is getting recorded, so you're sorted for this. So basically, margin relief ये हो गया कि suppose 12 lakh तक there is zero tax, right? But if a person who is earning 12,40,000 rupees, उस पे कैसा टैक्स का इम्पैक्ट बढ़ेगा? क्या उसका पूरा 12,40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा या सिर्फ 40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा? That is something which was questioned during the time, and एक document will share in the group. It is basically वो तुम्हें इनकम टैक्स के पोर्टल में मिल जाएगा. वहां पे दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि मार्जिन रिलीफ क्या होता है. तो 12,75,000 तक देयर इज अ मार्जिन रिलीफ दैट दे हैव गिवन कि अगर वहां तक है तो आपको जो नेट पार्ट है उस पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा. However, people having money beyond that would come under these slabs. So this was one topic that was covered. अभी slabs भी change हो गया है. For I think they have made it more consistent, and एक I think arithmetic progression का they were solving some question तो वैसे ही बना दिया है. For 4 to 8 lakhs there is 5% of tax. 8 to 12, 10%. Abhi you will say कि since 12 lakh tak to zero tax, and then why is this tax slab till 12 lakh? Why do we have this in the bar chart only? So do you have this any clarity on this? And नहीं भी है तो मतलब बता दो. I'll quickly move forward. हाँ ठीक है. हाँ बताओ धनंजय.
सर आई थिंक 12 लाख तक रिबेट मिल जाएगा पूरे अमाउंट का जितना टैक्स पे करोगे, एंड उसके ऊपर कितना के जो रिबेट है? सर मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं याद, बट आई थिंक 12 लाख से ऊपर 20 लाख के अंदर यूल गेट अ टैक्स रिबेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% ऑन द टैक्स दैट यू पेड। एंड मतलब 12 लाख से नीचे का तो जितना भी टैक्स आप दोगे वो पूरा वापस आ जाएगा आई थिंक। देखो 60,000 का रिबेट मिलेगा, ठीक है ना? और अगर तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे 12 लैक्स, तो तुम्हारा टैक्स पेबल भी 60 लाख 60,000 ही आएगा। फाइव ओके। परसेंट ऑफ 4 to 8 इज 20K, 5% ऑफ 8 to 12 इज 40K, समेशन इज तुम्हारा 60। तो 60। 60,000 was the rebate that the government would be giving, and your net payable tax up to 12 lakh rupees would be zero। ठीक है? ओके। ठीक है, रोशन बताओ क्या बोल रहा है? सर 12 लाख से नीचे वालों को रिबेट मिल रहा है, बट उनसे ऊपर वालों को रिबेट क्यों नहीं मिलता? आई डोंट गेट दैट। सबको खुश नहीं कर सकते ना, मतलब सबको रिबेट दे दोगे तो फिर कहाँ तक दोगे बताओ? देयर इज नो एंड टू द अपर लिमिट ऑफ अर्निंग, राइट, इन इंडिया। यस सर। एंड अब उसके सर ऊपर एक, बताओ यस बताओ यस। बताओ। तो सर मेरे एक और डाउट था कि ये रिबेट दिया क्यों जाता? अगर रिबेट देना ही है तो हम्म, ये टैक्स स्लैब लगाने का लॉजिक क्या हुआ? क्या पहले टैक्स स्लैब लगा दो फिर रिबेट दे दो? इससे तो अच्छा 12 लाख तो। वाले को ही रिबेट दे रहे हैं ना, उसके ऊपर वाले को तो ले रहे हैं। हाँ सर वो मैं समझा, मैं डाउट ये था कि अगर रिबेट देना ही है कि हम लोग जितना टैक्स ले उतना रिबेट में वापस कर दे रहे, तो वो टैक्स ले ही क्यों रहे हैं? वो रिबेट वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, इट्स अ गुड पॉइंट। रिबेट ले क्यों रहे हैं जब वापस ही करना है? बट अगर ठीक है गाइस, अभी बहुत सारा मैसेज आ रहा है। आई हैव टू वाइंड दिस एट 1 आल्सो, ठीक है? आई विल ड्रॉप माय ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर, मे बी आई एम आल्सो इन द ग्रुप, तो वी कैन कनेक्ट एक शॉर्ट, मतलब इन अ स्मॉलर फोरम आल्सो टू डिस्कस फर्दर। ठीक है? सो गुड पॉइंट यार, बट अगेन द मेन मोटिव इज टू शो दैट वी आर गिविंग रिबेट, राइट? ओके। ओके। देखो एक पॉइंट होता है कि ये वही हो गया, एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे जेब से रख दिया, बट उसको ऐसा प्लेन वैलिना मत समझो। बट देर आर वेरियस, अब देखो कि अब फॉर अ पर्सन हु इज अर्निंग, मतलब जहां तक मार्जिन रिलीफ मिल रहा है 1275 तक, वहां पे तो रिबेट भी दिखेगा ना, यस सर। राइट? तो मार्जिनली जिसका बेसिकली उन्होंने एक कैप डिफाइन कर दिया है कि यार 12 लाख से अगर 10,000 20,000 रुपया भी ज्यादा आता है, तो वो टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो दे हैव गिवन अ लॉजिक ऑल्सो कि 1275 तक देर इज सम मार्जिन रिलीफ दैट वी आर गिविंग, एंड जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो उस 75,000 पे होगा, या फिर उसका एक डिफरेंट मैथमेटिक्स है जो कि उस एक डॉक्यूमेंट विल शेयर ऑल्सो, उस पे देख लेना, ठीक है? तो ओके सर। दैट इज वन वे, तो रिबेट का रोल वहां पे आ जाएगा, राइट? और इसमें आई थिंक दिस इज द न्यू टैक्स रिजीम ना, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फिर एटीसी वाला, राइट? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन वाला, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वाला, यहाँ पे डिडक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है? दैट इज एन ओल्ड regime। सो तुम्हारे ऊपर है, वेन एवर यू विल ऑप्ट फॉर, बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, और बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारा ओल्ड regime लगा हुआ रहता है या न्यू regime लगा हुआ रहता है। तो वेन एवर यू विल फाइल आईटीआर, you will get both the views, whether do you want to file from the older regime or from the newer regime, and whichever would be cheaper या फिर लेस, जहाँ पे तुम्हें टैक्स बर्डन कम आ रहा है, मे बी यू कैन ऑप्ट दैट ड्यूरिंग द आईटीआर प्रोसेस। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 is कि what why such a step has our government taken, right, from directly increasing the slab from 0 to 7 lakh, and they have increased till 12। So any thoughts on this, guys? What, why? Point number 1, what impact will it have, and secondly why? Or maybe उसको auto reverse कर लेना यार, मतलब पहला why and secondly कि what impact will it have? And also please raise hands यार, चैट में ना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को ट्रैक रखने का। Anyone else besides uh, उत्कर्ष बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो अगर कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा इकोनॉमी में तो कंपनीज के हम्म रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे, एफआईएस के इन्वेस्टमेंट वापस आएंगे, बिकॉज
investment will look lucrative. कि, there is अरे some value creation. let's not talk about from the investment point of view. Yeah. Tell me from the Second, consumption side. yeah. So consumption बढ़ेगा तो GDP का जो government expenditure वाला part था, they'll cut back on that, and consumption से GDP growth में contribution they're expecting. So basically, गवर्नमेंट अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन लेते हैं या फिर जीडीपी का इक्वेशन लेते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन एक्स, तो तुम बोल रहे हो कि सी बढ़ जाएगा और जी घट जाएगा. दैट्स योर लॉजिक, राइट? Like G will reduce substantially, मतलब क्योंकि वो इतना सारा पार्ट जो इनकम टैक्स ले रहे थे, तो अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मल ईयर से थोड़ा कम करेंगे ना, क्योंकि अदरवाइज नहीं 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 they'll नहीं go into बट जी deficit. बट जी इज अगर बट जी इज नॉट, इफ यू टॉकिंग अबाउट द जीडीपी का डेफिनेशन, then उसमें जी इज नॉट गवर्नमेंट अर्निंग, दैट इज No, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. but government has to get like पैसा कहीं से आना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास to spend, अदरवाइज डेफिसिट बढ़ेगा. एंड टैक्स वो लोग कम कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि कंजम्पशन से ड्राइव इकोनॉमी थोड़ी. राइट राइट. ठीक है. ठीक है, अंडरस्टूड. कुलदीप, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. सो सर आई हैव रेड कि टोटल 1 लाख करोड़ का इम्पैक्ट आएगा ड्यू टू दिस इनकम टैक्स का जो भी देखो, हमने मेरे किया को है. 1 लाख करोड़ भी नहीं पता है और 100 करोड़ भी नहीं पता है और 10 लाख करोड़ भी नहीं पता है. मेरे को ये बताओ, तुम क्या समझ रहे हो? ये हाँ नंबर तो पुट कर से क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, बताओ. नहीं मतलब बेसिकली उससे जो है तो मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ेगा मेरे हिसाब से. तो अनटिल अनलेस देयर माइट बी अ न्यू बिजनेस जो कि हमें डिफेंस से बूस्ट करना पड़ेगा, या इसरो इसरो इज ऑल्सो अ बिग बिजनेस बूस्टर फॉर द गवर्नमेंट. अदरवाइज द फिजिकल डेफिसिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. तुम कह रहे हो गवर्नमेंट का अर्निंग कम हो जाएगा सब्सटेंशियली, राइट? जिसके यस. कारण द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स विल इंक्रीज. That's why fiscal deficit will increase and then government will have to make ways to make money, right? यस. ठीक है. अर्बन साहब बता दो. सो ये जो टैक्स उन्होंने रिबेट दिया एक्स्ट्रा, उससे कंजम्पशन पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा. हाँ जी. बिकॉज जो अमाउंट वो टैक्स के रूप में देते थे और वो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट देती थी, नाउ दे आर मतलब दे आर मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर कंजम्पशन बिकॉज दे थिंक दैट ये जो पैसा गवर्नमेंट पास जाता है ये अपने पास ही यूज करेंगे, मे बी दे यूज इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स. एंड ऑल्सो अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इतना भी नहीं बढ़ेगा फिजिकल डेफिसिट बिकॉज अदर सोर्सेज भी होंगे. हमारी अभी मेजर सही बात प्रॉब्लम है. है स्लो डाउन ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. वो तभी बढ़ेगी जब हम कंज्यूम करेंगे, रियल रियल हम्म. इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम्म. रियल कंजम्पशन करेंगे. हम्म. तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो हम डेफिनेटली हमारी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी एंड फिजिकल डेफिसिट भी फिर ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा. करेक्ट. देखो, Yes. अगेन फिजिकल डेफिसिट पे ना ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा. पॉइंट नंबर वन, दैट इज आई टोटली अग्री विथ यू. ठीक है. यश, तुम बता दो. सर, कंजम्पशन इंक्रीज होने से दे वुड बी इंक्रीज इन डिमांड, and an increase in demand is a good incentive for manufacturers and investors to basically invest in manufacturing capabilities. हाँ. So it will set off a virtuous cycle जहाँ पे investment would pour into uh, manufacturing and services also. So it will set off a virtuous cycle in the हम्म. economy जिसकी हम्म. हमें सख्त आवश्यकता है. ठीक है. ठीक है. अभिषेक लिटमस, सॉरी यार, जस्ट फॉर फन, बताओ. So, sir, I believe with the more income in their hand or the saving, so people will be able to invest or save more money, wherein हम्म. either they'll go to banks to go हम्म. like do deposits in terms of FDs. That way, हम्म. banks will be having more money, which will then again be able to pour it into the economy. हम्म. So राइट that they'll have a upper hand on that as well. राइट 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 राइट. Uh, so we have more hands. Who has not spoken till yet? तुलसी, प्लीज को. गाइस, ऊपर वाले मतलब ये पूरा वो मतलब तुम लोगों ने बहुत बार बोल दिया, इसलिए हम टॉकिंग. Hello. तुलसी बताओ. Sir, actually, I have a doubt. Like, if the First of all, you disposable, have to be a little louder.
so that I can listen to the doubt. Hello, am I audible Yeah, now? you're audible now. Okay, sir, actually, I have a doubt. Like, say, suppose the disposable income will increase, so the flow of money will increase in the market. Will there be a Right, possibility of inflation? right, right, right. Thank God someone pointed out that. ठीक है, that was your doubt. Yes, sir. हाँ ठीक है, we'll discuss this in detail. हेमंत बताओ. Hello. हाँ जी बताओ. Yeah, I was going to say something in the same lines. I was suspecting in liquidity and quantitative easing because we are also expecting interest rate cuts. हाँ. So is the Right. हाँ basically to ठीक है. increase liquidity? I think that's the main. Right. So yeah, just to summarize everything I also from had a this. question. Sorry. Yeah, बोलो. Yeah, it's actually a little separate from this. There's also a fund for startups, I think. So if why, what is that exactly? If we can discuss on that, or else not also, if the time is less. They have also Can you please come again with the term? right. They have also initiated a fund of funds for startup, right? I think they are. Is it something where they are pooling the VC monies in order to support the startups in a more structural way? Yeah, I'm not very aware of this right now. Okay. Okay. Let Understood. me Yeah. read about it. However, I feel it a little off because why would government or RBI would be interesting in pooling the money from the VCs? Okay. These are very separate things, right? Okay. I think And there is a also, commitment frankly, of 90,000 crore, but I guess I might be off about how they are doing it, I guess. yeah, right. Even because VC ka money, why would the VC would be also interested in collaborating with the government? But again, right now, नहीं पता है मेरे को, but we'll definitely go back and read about it. That's how you answer a question in an interview when you don't know an answer. ठीक है. So long story short, guys, first of all, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, राइट, क्योंकि टैक्स कम हो गया है. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि हमारा इनकम जब जनरेट होता है तो फिर उसके बाद हमें टैक्स देना पड़ता है, राइट, विच इज इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स. अभी क्या है कि कम टैक्स देना पड़ रहा है, यानी हमारा डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो गया. तो ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होता है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, हमारा सेविंग्स भी बढ़ता है, और सेविंग्स अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट. दैट इज C+S = C+I. अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अगर आप लोगों को याद होगा 11वीं में, या फिर अगर तुम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कवर किया होगा हम लोगों ने इनिशियली इकोनॉमिक्स वन वाले में, तो वी हैड स्पोकन अबाउट दैट. सो कंजम्पशन बढ़ रहा है, राइट, और सबका कंजम्पशन बढ़ रहा है. अब क्या होगा कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो देयर वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व याद होगा सबको. डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. तो वंस यू कैन ड्रॉ दैट इन द डायग्राम ऑल्सो अपने कॉपी में, कि जब डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड और राइटवर्ड दोनों सेम होता है, ठीक. यू विल सी दैट कि प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा. तो देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे, ठीक है. अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा डिस्पोजल इनकम भी बढ़ गया, और तुम खुश भी हो गए, मार्केट में महंगाई बढ़ गई, तुम्हारा परचेजिंग पावर उतना ही रह जाएगा शायद. अगेन डिपेंड्स ऑन विच कैटेगरी ऑफ गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो शायद तुम उतने अमीर नहीं हो पाओगे जितना हम लोग सोच रहे हैं कि टैक्स कम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मनी टू डिस्पोज विल इंक्रीज. पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट की अर्निंग उतनी कम नहीं होगी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, ठीक है. तो अगर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम टैक्स ब्रैकेट, एंड उनका कंजम्पशन अगर मैं इंक्रीज करा रहा हूँ किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दे विल बी पेइंग जीएसटी, दे विल बी पेइंग एनी अदर ड्यूटी, राइट. एंड ड्यूटी एंड जीएसटी किसका अर्निंग है? सरकार का ही अर्निंग है, राइट. और इसमें तो और इक्विटेबल हो जाएगा कि स्टेट को ही मिलेगा और सेंट्रल को ही मिलेगा कुछ पैसा. तो दैट्स हाउ द this the concept will work. However, this will also depend on the nature or how the people will react to this kind of a policy or exercise. Yes, Kunal, Hello, am I audible? you're audible very Yeah, much. I wanted to ask ki, like just you said ki there are not much people who fill taxes. So Yeah, do you direct think the taxes.
Yeah. So do you think the rebate can be the reason keep they add more people in the list where people are now going for it? That is one of the reasons that they also want people to be registered in the ITR portal. Yeah, so that they have more data, more The more knowledge data, of where correct, the money is going. correct, exactly. First of all, not only the salaries and business income will come under the bracket. Yeah, Secondly, तुम्हारे पैन कार्ड से जो भी चीज लिंक्ड होता है वो आईटीआर में दिखता है, राइट? चाहे तुम्हारा yeah, एफडी हो, चाहे तेरा स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो पूरा पिक्चर फिर गवर्नमेंट के पास रहेगा, राइट? एंड 12 लाख का इनकम तुम्हारा शायद इस साल है, अगले साल तो बढ़ेगा, राइट? तुम टैक्स ब्रैकेट में आ ही जाओगे, ठीक है? got it. तो Yeah, yeah, सो मे बी दिस इज नॉट समथिंग which is written anywhere, but again, we should always try to read between the lines. I may be wrong, but got it. that's how I am sensing it. Good point. Thank Yes, you. Tulsi, please. So actually, something maybe unrelated, but like say suppose people were expecting to have a rate cut. Now disposable income is increasing, so Rate cut से क्या? What do you mean by rate cut? RBI repo rate. अच्छा, रेपो Okay, रेट. so क्योंकि बहुत सारे basically, रेट्स होते हैं, बैंक रेट होते हैं, रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, sorry, I राइट? wasn't keen with that. Okay, so basically now the disposable income is increasing, so I don't think there's a need to cut the rate. So is that related? I mean, honestly, दोनों का इंटेंट सेम है. रेट कट करके भी देयर इज दे वांट टू फ्लोट मोर मनी इन द मार्केट, ठीक है? एंड बाय रिड्यूसिंग taxes also, they want to float more money in the market. What is the fundamental difference between two? Can anyone say? कि बेसिकली हमारा डिस्पोजेबल या इकोनॉमी में ज्यादा पैसे फ्लश करने हैं, राइट? देयर आर टू मेथड्स. एक होता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसको हम लोग रेट कट बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो बेसिकली जो लेंडिंग रेट्स होते हैं वो कम कर दिया, या फिर टैक्स रेट कट कर दिया. तो मार्केट में दोनों तरह से पैसे ज्यादा आएंगे, राइट? अग्रीड और नॉट, मतलब यस या नो बता दो यार, आई नो एक बच गए हैं. Yes, sir. Yes. यस यस, ठीक है ठीक है. 5 4 मिनट में निपटा सकते हो तो निपटा लेंगे यार. या फिर गाइज, इफ यू आर फीलिंग स्लीपी तो प्लीज मतलब फील फ्री टू लॉग ऑफ. इट्स ओके, ठीक है. इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों में? एनीवन? गलत आंसर भी चलेगा यार. With repo rate, it would be the money that we are getting would be lent by the bank, and with the disposable income, it would already be our income only, but we don't have to give any interest on it, I guess. ठीक है. Individual versus business, I guess that's the fundamental difference. Not really, but मतलब good attempt यार. मतलब I am just trying to find the concepts कि हाँ बताओ अद्विका. हाँ नहीं नहीं, रुक जाओ अमित, हाय. Hi, sir. So I think whatever the money people will be saving from income tax, they might use it for investment, and from whatever the money coming from the bank, it would be more for the consumption part, as we यार take loans for तुम लोन consumption. लेके फ्लैट खरीद पाओगे ना? Yes, yes, या फिर लोन लेके तुम मशीनरी, बिल्डिंग, फाइनेंस क्लास, फाइनेंस वन, राइट? yes, yes. ठीक है, अद्विका बताओ. Bank rate is a monetary tool, whereas tax rate is a fiscal tool. Excellent. So guys, there are two policies, monetary policy and fiscal policy. ठीक है? तो जो बैंक की तरफ से, जो आरबीआई की तरफ से या सेंट्रल बैंक की तरफ से जो भी पॉलिसीज आती हैं, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. और जो गवर्नमेंट के साइड से आती है, बेसिकली टैक्सेस और पेनल्टीज, फाइन्स, ड्यूटीज, ये सारे हमारे फिस्कल टूल होते हैं, ठीक है? एंड दोनों के बोथ बोथ द अथॉरिटीज, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, द वन हु, बेसिकली आरबीआई इज वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो दोनों बहुत इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडीज हैं, बट दोनों का एम या फिर
टारगेट ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, either to ease the basically monetary ease the expansion or contraction. It can be done by two ways: monetary policy, fiscal policy. Monetary is done by the RBI and fiscal is done by the government by relaxation or tightening of the taxes. And by RBI, repo rate, bank rate, XYZ बढ़ाना घटाना, ठीक है? गुड वन। ठीक है यार, चलो, पेनल्टीमेट स्लाइड इज योर, कि जो बेसिकली गवर्नमेंट अर्निंग हो रही है या फिर गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो किस सोर्सेस से आता है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रेकअप, जो कि सबसे पहला तुम देख लो कि बोरोइंग से हमारे पास 24% इनकम जनरेट हो रहा है। एक सेकेंड। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स हो गए एक तरह के अर्निंग। नॉन टैक्स रिसीट्स में बेसिकली फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब जो छोटे मोटे होते हैं ना, या फिर तुम्हारा जो तुम ये पे, अरे यार क्या बोलते हैं, चालान वगैरह हो गया, वो सारे चीज इस सब में आ गए, नॉन टैक्स रिसीट्स में आ गए। नेट डेट कैपिटल रिसीट्स हो गए बेसिकली, कि जो कैपिटल नेचर के हैं बट दीज आर नॉट डेट। ठीक है, एक तरह का लोन नहीं है वो, बट दीज आर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पसेस। ठीक है, दैट इज ऑल्सो 1%। 4% इज वॉट कस्टम ड्यूटी। ठीक है, 17% इज कॉर्पोरेशन टैक्स, तो दैट्स वाई अ बूस्ट फॉर द कॉर्पोरेट्स इन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि एक मेजर चंक यहाँ से आ रहा है। 18% इज जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, राइट, एंड अगेन जीएसटी का शेयर इज इंक्रीजिंग। अगर तुम आई थिंक 2019 एफ 19 और 20 का देखोगे और अभी का देखोगे 5 years पीरियड में, तुम्हें बहुत डिफरेंस दिख जाएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड 22% इज इनकम टैक्स। तो कहीं ना कहीं देखोगे देर इज some sort of a parity between income tax and GST, basically direct tax and indirect tax. So what we can do here is, जो हम लोगों ने दो स्लाइड पहले, एक स्लाइड पहले बात की, there could be a shift or maybe some sort of a change in this composition, right, when we discuss budget next year. Okay. Correct, correct, correct. Abhishek Sangal, so stamp duties are also non-tax receipts, हाँ, correct. Sorry, yeah. Where rupee goes, so basically if government is spending 100 rupees, तो वो 100 रुपए हमारे कहाँ कहाँ जाएंगे। सो सबसे पहला इज इंटरेस्ट पेमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, बोरोइंग्स। ठीक है, अब देख लो कि उस बोरोइंग का नतीजा 20% हमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, राइट। तो जितना कम बोरोइंग होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट होगा, करेक्ट। सो बोरोइंग, देखो बोरोइंग हम लोग अपने लेवल पे मतलब एज एन इकोनॉमी के लेवल पे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि उस साल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उस साल में ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फंड करना पड़ेगा थ्रू बोरोइंग्स। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट इज नीडेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इनिशियली हमारी बात हुई थी 2 घंटे पहले कि 4.6 इज द फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज। हाउएवर एफआरबीएम एक्ट जो होता है, एक बार गूगल कर लेना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, वो कहता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए, राइट, ऑफ जीडीपी। तो ऐसा क्या होता है कि हाउ दिस मैजिकल फिगर कम्स इज समथिंग दैट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस, बट ये समझ लो कि यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्रीज आते हैं ना, उसका हम लोगों ने स्टडी किया था। तो एक वेटेड एवरेज फिगर निकला था कि सबका जो बोरोइंग्स होता है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, दैट इज रफली इक्वल टू 3%। So that's how that number, that figure was taken and how that be incorporated here. I think FRBM Act came in 2004. Bill was introduced in 4 and it became an act in 2005. Maybe wrong, but ठीक है। उसके बाद so 20% goes to interest payments, right? 16% comes goes to सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, बेसिकली जो भी हमारे स्कीम्स चल रहे होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो जा चले जाते हैं। उसका 16% इज द वेटेज। 6% इज ऑन मेजर सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें 6% तुम्हारा एक्सपेंडिचर है आउट ऑफ द टोटल 100%। 8% एक्सपेंडिचर इज ऑन डिफेंस, राइट,
उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, इट गेट्स डिवाइडेड राइट between state and central, or union territory and central. So there is some sort of a distribution of income also. Finance commission, so basically finance commission, 14th finance commission, 15th, I'm not sure कि 15th आया है कि नहीं, but उसमें भी ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में बहुत बात होती है राइट, कि गवर्नमेंट किस किस जगह पे इन्वेस्ट करेगा, तो उन सारी पॉलिसीज जो फाइनेंस कमीशन में डिस्कस होती है, दैट इज रफली 8% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग. Centrally sponsored schemes is again 8%. Other expenditure is basically, other expenditure is a laundry list of all different forms of expenditure which a government makes. And lastly 4% goes to pension. Pension basically क्या है कि अब people who are getting into central government jobs will not be getting pensions after 2004 के बाद जिनका भी enrollment या फिर बहाली हुआ है. So with the passage of time, शायद अगर हम लोग 10 साल बाद भी ये बजट डिस्कस करेंगे तो ये पोर्शन आपको कम होता हुआ नजर आएगा. ठीक है. So this was, again guys, this too was the major slides that I wanted to discuss. Receipts. Again, these are just figures talking about revenue receipts and capital receipts in lakhs CR कितना है, मतलब you can always have, or know these numbers just for your own consumption or for from your own knowledge. ठीक है. So some deficit trend that we are seeing, देखो 2021-22 में, because there was an impact of COVID, 6.7% was the fiscal deficit. आपको यार मतलब, if you guys remember this or read this about, now it has decreased to 4.4%, and कहीं ना कहीं we are moving towards that 3% mark, right? Revenue deficit. So fiscal deficit तो मैंने बता दिया था क्या होता है, कि कितना बोरिंग चाहिए होता है, बेसिकली गवर्नमेंट इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू डेफिसिट होता है बेसिकली ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट की अर्निंग जो होती है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट. एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. या दिस फाइनल थिंग, तो बेसिकली आप देख लो सेक्टरल व्यू, देख लो एक्सपेंडिचर के, कि कितना किस किस सेक्टर में एक्सपेंस स्पेंडिंग हो रही है. नंबर्स याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, नहीं याद रहेंगे. बेसिकली यू कैन ऑलवेज रिमेंबर इट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ठीक है. या फिर कौन से सेक्टर में कितना ज्यादा हो रहा है, तो यू कैन सी दैट डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है. आई थिंक 8% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो फिर देर इज, सेकेंड इज रूरल डेवलपमेंट. अगेन प्राइमरी फोकस, आई थिंक रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट ईयर के बजट में भी फोकस में रहेगा. होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, एजुकेशन, although मतलब एजुकेशन विल मूव अप इवेंचुअली, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट में कितना है, आईटी, एनर्जी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट, राइट. ऑल दीज फिगर्स आर इन INR CR. ठीक है. ठीक है गाइस, आई थिंक वी हैव कवर्ड, we are 7 minutes late. Any parting thoughts on this discussion, or you want to close it? Any feedback, any observations, Excuse me, sir. any takeaways? Yeah, hi Adrika, please go on. Sir, just Acha, wanted to know that, yeah, 2 or 3 times yesterday some estimate was mentioned, so I'm not aware of that. Can you please talk about that a bit? budget estimate. No, yes, like 2 or 3 times some estimate was mentioned, which was like revealed yesterday. Okay. Economic survey, yeah. Someone हाँ, mentioned economic survey. हम्म. So you want to discuss it right now? Yeah, like if you could tell that क्या था वो in some 2-3 minutes. I think यार economic survey discuss करने का time उतना है नहीं. Can we take this up in a smaller forum next time? Sure. Because I think we also have to look at the paucity of time, and it's a broader Yeah, concept. इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा if you want to really cover and draw no worries, parallels, no. like, right? Yeah, Advika, please go on. What was the reason that you mentioned about the 3% of GDP? If you could repeat. यूरोपियन यूनियन में जितने भी इकोनॉमीज आते हैं ना,
Mm-hmm. उनका एक historical figure analyze किया All गया right. था कि how much of the borrowings do they do And this across is all those. this was last year or like when No, I? no, 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 बहुत पहले का. All right. Okay. Because that act was passed in 2004, Mm-hmm. became a bill in 2005 और 14 मतलब या 30, आई एम नॉट वेरी श्योर है, मतलब अभी अचानक All से right. मुझे याद आया था, डेट मुझे याद नहीं, बट ठीक. वो यही है, मतलब कॉन्सेप्ट यही था. हाँ हाँ, Oh, तन्वी बताओ. thank you. So there was some talk about capital expenditure. या केपेक्स, हाँ. सर उसमें मतलब कुछ एनालिसिस देख रही थी एंड दे वर डिसअपॉइंटेड कि उसमें कम एक्सपेंडिचर मतलब कम हो रहा है कैपेक्स. हम्म. सो बट इसमें कुछ ज्यादा मेंशन नहीं था, तो कैन यू एक्सप्लेन अ बिट ओवर इट? देखो केपेक्स हमेशा ना, मतलब दिस टाइम द एम्फेसिस वाज मोर ऑन एग्रीकल्चर एंड तुम्हारा सर क्या बोलते हैं इसमें, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली, राइट. केपेक्स वाज नॉट अ प्रायोरिटी दिस टाइम इन दिस बजट. लास्ट ईयर आई नो 10% of the GDP was capex, right? That's why it was a huge priority. But again, like I said earlier, कि ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, केपेक्स होते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है ना, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ शॉर्ट शॉर्ट टर्म बेसिस. एक साल में वी कैन नॉट मेजर, क्योंकि जो पिछले साल के बजट में अनाउंस हुआ होगा वो अभी भी चल ही रहा है, राइट. सो इतने शॉर्ट टर्म में वी कैन नॉट रियली सी दैट इम्पैक्ट और चेंज. इसलिए आई थिंक जब लास्ट ईयर ज्यादा कर लिया तो हो सकता है इस बार इट इट हैज टेकन अ बैक सीट. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, राइट. ओके सर. या हरबंस प्लीज. Yes, I wanted to add a point from Nirmala Sitharaman's address to the media. It is प्लीज. not less. The capex is not less. हाँ, They इट have इज नॉट. said that. हाँ, आई नो, Yes, या. sir. But statistically, they are saying that they have increased it 10% amount. मतलब 10% से they've increased. I agree with you that they are focusing more on human development index and consumption, etc. So I wanted to ask, sir, how would they manage inflation? Like, if they are focusing more on increasing the disposable income, मुझे भी वो समझ नहीं आ रहा. How would they manage it? सो Because it's not. Yeah. व्हाट्स योर बैकग्राउंड? So commerce. कॉमर्स, राइट. Yes, sir. इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, राइट. पढ़ा होगा. Yes, sir. Yes, sir. Demand Demand and side and supply costs. supply supply side. Yes, sir. This Yes, is sir. going to be a demand side inflation, correct? And that would be a good sign. Good, exactly, yeah, right. Because Okay. ultimately your aggregate demand and aggregate basically Y जो excesses होता है income Yes, sir. या GDP, that is going to increase, right? I got it. That got it. Thank you, sir. ठीक है. Yeah, Tanvi, you want to add something else? No, sir. I just forgot to turn चलो ahead. ठीक है. तो ठीक है, thank you so much guys for taking your time. I had a wonderful session with you all. Okay, and hope you guys do well in your upcoming interviews. Also, this is a personal milestone for me because this is the first time I've taken this session solo. And thank you so much. God bless. Good night. This was Ayush signing off. Bye bye. You please drop off. And yeah, thank you guys. Thank you so much. Thank you. ठीक है. चलो guys, I'm leaving.